500 तो ले लो बाबूजी, लेकिन ये बताओ कि आपने गधे के कान में क्या कहा? तो हमने कहा कि भैया कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात गधे को हमने बताई कि मैं कवि हूँ, कविता सुनाऊं? तो गधा बोला तो गधे भी हमें नहीं सुनते। बहरहाल अगले दिन की हमारी फ्लाइट थी, बट जब सर पोस्टपोन होगी, रीशेड्यूल होगी, तो हमने बोला चलो फिर मेले चलते हैं। इस बार फिर उसी दुकान के सामने सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अब 100 के 500 नहीं, 100 के 1000 रुपए मिल रहे थे। शर्त बदल चुकी थी। गधे का सिर्फ एक बार हाँ में हिलाना था और एक बार ना में। हमने बोला 100 पकड़ो, 1000 तैयार रखो। फिर हम गधे के पास गए, हमने गधे के कान में कुछ कहा, तो गधे ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर उसके बाद हमने फिर कुछ कान में कहा, गधे ने फिर अपना सिर ना में हिलाया। तो अब वो जो दुकान वाला था ना, वो पाँव पे गिर गया। वो बोला कि भैया 1000 रुपए ले लो, मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन तुमने गधे के कान में क्या कह दिया? तो हमने कहा कुछ नहीं, बस इतना कहा, पहचाना? सुनाओ। तो हमें गधे भी नहीं सुनते। बहुत ज्यादा नवाजी आप लोगों की कि आप हमें सुन रहे हैं। ये छोटे से हल्के फुल्के अंदाज के साथ चलिए हंसी के इस पल को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाते हैं। हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान जो अपने आजादी के 75वें वर्ष में है, हम उसके आजादी के अमृत काल में है, हम उसके आजादी के अमृत महोत्सव में है। और ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इस सुनहरे अवसर पर पूरा हिंदुस्तान जो मां सरस्वती की वंदना करता है, सरस्वती के ज्ञान के प्रतीक के रूप में कही जाने वाली पुस्तकों के विमोचन के शुभ अवसर पर आज हम सब यहाँ उपस्थित है कि नहीं? और मैं देख रहा था कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत सुबह 9 बजे आ गया था। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हमारा हिंदुस्तान फोटो में खिंचवा रहा था, हमारा भारत सेल्फी ले रहा था। हमारा भारत जिसके कंधों पे भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो लोग आ गए थे। खाली हिंदुस्तान ही नहीं आया था, है ना? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले लोग आ गए थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी अपने इसी अंदाज से भी जाने जाते हैं। हम देर से भले पहुंचे, लेकिन आखिर में हम विश्व में नंबर 1 पे ही पहुंचते हैं, है कि नहीं? तो चलिए इस सभा की शुरुआत करें, इस महफिल की शुरुआत करें, इस महोत्सव की शुरुआत करें। एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर a grand book launch and world record celebration. And as told to you, we have among us the chief guest of today's function, Dr. T.N. सुरेश कुमार जी। और मैंने अभी मां सरस्वती जी की बात की, तो हमारे किसी भी कार्यक्रम का जो शुभारंभ होता है वो मां सरस्वती की उपासना से, वंदना से होता है। और दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय संस्कृति का इतना सुनहरा प्रतीक है कि हम उसके बिना किसी कार्यक्रम का आगाज नहीं कर सकते। तो चलिए हम गुजारिश करते हैं मुख्य अतिथि आदरणीय श्री टी.एन. सुरेश कुमार जी से, श्री रविशंकर जी से, श्री प्रमोद कुमार जी से, दिनेश गुप्ता जी से और निशदीप सिंह जी से, मैडम प्रतिभा मिश्रा जी से, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को संजोया है श्री आकाश भाबर जी। और आकाश भाबर जी के माता पिता जी भी हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं कि आप भी आइएगा और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कीजिएगा। लेट अस बिगिन विद द लाइटनिंग ऑफ लैम्प। जी आइएगा। मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम दीप प्रज्वलन को प्रतीक के रूप में जला करके माहौल को शुद्ध करते हैं। जी हाँ, जब हम 75वें वर्ष में हैं तो नारी शक्ति को प्रधानता दी जा रही है और स्त्री शक्ति के रूप में। जी हाँ, जी हाँ। या तुम्ही पण या चालेल, मला मराठी येत नाही, समजून घ्या। और मां सरस्वती का वंदन होता हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस शुद्ध माहौल में दीप प्रज्वलन कर पूरे वातावरण में सुख, शांति और समृद्धि का ये महका महका धुआं, ये जलती हुई रोशनी, ये उभरता हुआ प्रकाश आपके हृदय को छूता हुआ
बहुत शुक्रिया गणमान्य जन, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। काइंडली ऑक्यूपाई योर सीट्स इन द ऑडियंस गैलरी प्लीज। और ये सुंदर मधुर धुन जो मां की वंदना से प्रेरित है, वो हमारे कानों के जरिए हमारे जहन तक पहुंचती हुई हमारे हृदय जी बहुत शुक्रिया। साक्षी जी जब इस धुन को बंद कर देगी तब आगे की जानकारी आप तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया साक्षी। कहते हैं कि खाली अपने दिल का मकान रहने दिया, खाली अपने दिल का मकान रहने दिया, तुम गए तो किसी और को भी कहां रहने दिया। खाली अपने दिल का मकान रहने दिया, तुम गए तो किसी और को भी कहां रहने दिया। कल रात मैंने चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, बस कागज पे लिखा एक लफ्ज मां रहने दिया। तो हिंदुस्तान एक ऐसी धरती जहां पर माता को हम ईश्वर तुल्य मानते हैं, और आकाश जी की माता जब यहाँ पर हैं और मां सरस्वती का वरदान हम देते हैं, नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में सबसे पहला दिया हमारी एक नारी शक्ति जलाती है, तो निश्चित तौर पे हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है। हमें लगता है कि माँ का आशीर्वाद हमारे बीच में है, और माँ सरस्वती भी माँ है जिसके ज्ञान के प्रतीक के रूप में पुस्तकें आज हमारे बीच हैं। And the most important function is going to be held very soon, and I'm going to take you along the journey, right? ठीक है, बशीर बद्र साहब ये कहते हैं कि बस्तियां क्यों जली, बाजार क्यों लूटे, मैं चांद पे गया था मुझे कुछ खबर नहीं। ये बशीर बद्र साहब भले कहते हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस इवेंट के बारे में आई एम द लीस्ट नोन पर्सन, मुझे ही सबसे कम पता है, शायद आप ही सबको सबसे ज्यादा पता होगा, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आकाश जी की, साक्षी जी की मोहब्बत है, इसकी बदौलत मैं आपके बीच हूँ। मुझे इतना बताया गया कि आज एक बुक लॉन्च, ग्रैंड बुक लॉन्च इवेंट है और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेलिब्रेशन है, बहुत सारे ऑथर्स हमारे बीच में आने वाले हैं, मुझे ये जानकारी दी गई, लेकिन इस जानकारी से तो काम चलेगा नहीं, है ना? इस जानकारी से अगर काम नहीं चलेगा तो इस पूरे इवेंट का रुबाब क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, हाउ द इवेंट हैज स्टार्टेड एंड हाउ वी आर हियर एंड वेयर वी आर गोइंग टू रीच, the whole of the background is to be told to all of you, and now let me invite for this श्री आकाश जी, है ना? आकाश जी जो भाभट इंटरनेशनल पब्लिकेशन को लीड कर रहे हैं, जो ABCD इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही संस्थाओं के माध्यम से आज जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन, संचालन, प्रतिपादन, निष्पादन किया जा रहा है, उसके लिए आकाश जी आपका आह्वान, आइए जानकारी दीजिएगा। श्री आकाश भाभट। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद है, ईश्वर का धन्यवाद है। आप सभी ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे इवेंट में आए, इतना सपोर्ट किया। तो जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं सिर्फ आकाश भाभट, तो आप सभी को बताने की वैसे जरूरत नहीं, पर एक बताना चाहता हूँ क्या एक्चुअली रीजन है उसके पीछे, ये जो इवेंट्स है। हाँ, ये भी तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। क्या ना, इमोशंस आते हैं, तो भाभट इंटरनेशनल पब्लिकेशन का शुरुआत ऐसे हुआ था कि मैं भी एक ऑथर बनना चाहता था, बिजनेस कोच बनना चाहता था। तो किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा कुछ एक्सपर्ट नहीं है, तो तुम्हारा कुछ ऐसा अथॉरिटी क्रिएट करना जिसकी वजह से तुम लोगों को दे पाए, मतलब जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं लोगों के जीवन में, जो तुम सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे? तो मैंने बोला मेरे पास जो है मैं वो शेयर कर सकता हूँ। तो बोला बुक लिखो ना। तो बोला ठीक है लिखेंगे, उसमें क्या है। तो मैंने पहला बुक लिखा था 20 एसेंशियल हैबिट्स फॉर सक्सेस, और वो मैंने पब्लिश कर दिया था अमेज़न पे। तो मुझे पता था वो सब चीजें। दूसरी बार जब किताब लॉन्च किया तो मुझे पता चला
कि किताब से लॉन्च करने में कुछ नहीं है, लिखने में कुछ नहीं है। किताब को हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए यूज करें ना, वो इम्पोर्टेंट है। और वो सोच के साथ एबीसीडी इंटरनेशनल या भाभड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन की शुरुआत हुई और हमने ऐसी काफी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना हमारा मेन मकसद है और हमने 31 दिसंबर 2022 तक 100 सक्सेस स्टोरीज ऑथर्स के क्रिएट करने का सोचा था और 100 सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा हो गए अभी। और हमने हमारे टीम में सभी ने अभी डिसाइड किया कि अभी 31 को 1000 से प्लस करेंगे और बहुत सारे इनिशिएटिव करेंगे। और हमारा जो यूएसपी है, पहले तो मैं अपने पब्लिकेशन के बारे में ये बता रहा हूँ क्योंकि एक बेसिक आइडिया है, फिर अपन इवेंट के बारे में आते हैं। और फिर हमने यूएसपी सोचा कि हमें क्यों, हमारे साथ क्यों लोग जुड़ेंगे। जब अभी रविशंकर जाए ना, मुझे एकदम तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ यूनिक बनाएंगे। यूनिक क्या है? क्योंकि हमारे पास क्रिएटिव माइंड है, तो उसका यूज करके हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अपना यूएसपी ऐसा रखेंगे कि हर एक बुक हम ऐसा पब्लिश करेंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट हो, या तो बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनाएंगे या ऐसे ऑफलाइन इवेंट्स जो बड़े करेंगे जिसमें हम वो बुक्स लॉन्च करेंगे। और वैसे ही किया सर हमने, बहुत सारे बुक्स लॉन्च किए। सिर्फ एक बुक था जो मदर लेवल लॉन्च हुआ था श्रुति मैम का, वो एक सिर्फ अलग पार्ट था। बाकी जितने भी बुक्स थे सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड के इसमें आए। तो बताने का पर्पस यही है कि हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 75 इयर्स हुए हैं आजादी का अमृत महोत्सव, अभी इस पे हम क्या करें अलग। तो ये सोच उसके पीछे थी कि अलग क्या करना है। तो फिर अलग ऐसा करना है कि हमारे जितने भी अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर से अलग अलग स्टेट के ऑनररी, तो उन लोगों के साथ मिलके अपना ये 75th ईयर है अमृत महोत्सव, इसको मेमोरेबल बनाएंगे। तो मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ना कुछ एक सोचा, ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सभी को इन्वॉल्व करेंगे। और इसलिए हमने क्या किया कि जितने भी 75 इयर्स से नंबर 75 के रिलेटेड लॉजिक्स क्रिएट किए, दिनेश जी थे, उनको फोन किया, सर ऐसा ऐसा करना होगा। बोले बिल्कुल होगा, आप करो तो सही। तो उन्होंने वो बताया। उसके बाद हमने 2 महीने लगातार कोशिश की, सभी लोगों ने सपोर्ट किया और इन लोगों की वजह से ही वो सब कुछ हुआ। ऑल क्रेडिट टू ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स ओनली, वो ब्रांड एम्बेसडर्स की वजह से पॉसिबल हुआ। और इसमें बहुत सारी मेहनत की सभी ने। और आज जो अपन बुक लॉन्च करने वाले हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसका नाम भी रखा है। और जो उसमें हम 1947 से लेके अब तक जो इंडिया ने ग्रोथ किया, अचीवमेंट्स है, जो प्राउड मोमेंट्स है, वो उसमें ऐड किए हैं और वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका मतलब अपने देश के बारे में उनको ऐसा प्राउड फील नहीं होता। हमारा मकसद ही वही है कि भाई तुम प्राउड फील क्यों नहीं होता, क्यों तुमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तुम अपने देश के बारे में जानना नहीं है, तो तुम अभी क्या करो, अपने देश के बारे में पढ़ो ये बुक से। और जिस दिन तुम पढ़ोगे उस कंडीशंस, उस प्राउड मोमेंट्स के बारे में, उस दिन आपने आप तुमको भी प्राउड फील होगा। ये उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव। बाकी बुक लॉन्च वगैरह वो तो करते रहेंगे, आप सभी के आशीर्वाद ब्लेसिंग्स के साथ वो होगा ही, गॉड्स ग्रेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बुक जो है 75 ब्रांड एम्बेसडर्स ने लिखा है। और फिर से एक बार कहूंगा, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाश जी। साथी हम सुन रहे थे आकाश भाभड़ जी को, जिन्होंने पहले तो भावुक होते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और फिर अपने शब्दों को व्यक्त किया और बताया आप सबको कि क्या पृष्ठभूमि है, क्या मकसद है। दिनेश जी और सभी ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने सहयोग किया और आजादी के इस 75वें वर्ष में 75 आलेखों के साथ, like with the 75 articles, we have a book ready which depicts the journey of India right from the independence, isn't it? So भारत की आजादी से लेके अब तक की गाथा और इसके बाद का आने वाला पड़ाव, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो गुजरा हुआ हमारा भूत है उससे हमें सीख लेनी है, वर्तमान में उसे संजोना है और फिर भविष्य का निर्माण करना है।
ये हमारी पूरी राष्ट्र की शक्ति है और इसी मकसद के साथ हम सब यहाँ पर हैं और सब बहुत अच्छे लेखक यहाँ पर हैं, बहुत अच्छे चेहरों से मुलाकात मेरी हो रही थी, बातचीत हो रही थी। And I could guess like you have all the talent, all the what you can say the knowledge engraved inside you, जो आपने शायद अपने शब्दों के माध्यम से पुस्तकों में डाली है और पुस्तकों में डालते रहेंगे और हमारी पीढ़ी का भविष्य का निर्माण करते रहेंगे। बहरहाल ये वक्त है आज की सभा के मुख्य अतिथि महोदय को सुनने का, जिनका नाम है डॉक्टर टी.एन. सुरेश कुमार जी, जो रिटायर्ड स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो एक बहुत बड़े ऑथर हैं। वो हमारे बीच में हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी उपस्थिति हमें बहुत लाभान्वित करती है, प्रेरित करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर, एंड नाउ वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू सर, एंड बिफोर यू कम ऑन द डायस आई वुड रिक्वेस्ट श्री प्रमोद कुमार राजपूत जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कि सर हम सर का सम्मान करें, जो हमारे पास एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, शायद श्रीफल, शायद शॉल, शायद जो भी है। जी उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में है। जी मैडम प्लीज आइएगा। मैंने कहा था कि इस सभा में सबसे कम जानकारी मुझे ही है, लेकिन मेरे पास आसपास बहुत सुंदर चेहरे हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं जो ये मुझे गाइड कर रही है। थैंक यू वेरी मच आयुषी। Please come back. Sir, it is always required because we have the tradition of honoring the elders and taking the blessings. So, Mr. and Mrs. सुरेश कुमार जी हमारे बीच हैं। श्री प्रमोद कुमार राजपूत जी सम्मान करते हुए मंच पर यदि आपका आगमन होगा तो दृश्य ज्यादा सुनहरा होगा, ज्यादा आकर्षक होगा। ये बात है कि खामोश खड़े रहते हैं और जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, उनका सम्मान होते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार जी और आकाश जी मिलकर सम्मान करते हुए डॉक्टर टी.एन. सुरेश कुमार और उनकी अर्धांगिनी जीवन संगिनी का मिस्टर एंड मिसेस टी.एन. सुरेश कुमार we see on the dais, ladies and gentlemen. A big round of applause, please. Big round of applause. Yeah. It will be wrapped and kept safe, will be delivered to the guests later. But now it is high time to listen from Dr. टी.एन. सुरेश कुमार। जोरदार तालियों से डॉक्टर टी.एन. सुरेश कुमार जी का स्वागत करते हुए पहले वो जानकारी जो आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि आप अपने हृदय को तैयार कर लें, आपके दिलों में वो जुनून भर जाए, वो भूमिका तैयार हो जाए। T.N. Suresh Kumar started his career at Indian Space Research Organization at Ahmedabad in 1978. He has worked as R&D engineer at Space Applications Center for Bhaskara Earth Observation Satellite. He contributed for the development of India's first communications satellite Apple, the Ariane passenger payload experiment. Later he was relocated to INSAT satellite program at Hassan, Karnataka state. He participated in setting up Earth Station with 14-meter fully steerable indigenously developed antennas for tracking geostationary satellites.
He received training in spacecraft control operations by Ford Aerospace Communications Corporation, USA. He was flight director for INSAT-1 and INSAT-2 series of satellites during launch and station-keeping maneuvers. As operations manager, he carried out multi-satellite operations of INSAT, and Earth series of satellites. He was deputed by Indian Space Research Organization ISRO to Telegraph Station, Canberra for mission operations of INSAT satellite. He was one of the shortlisted astronauts to go to space by NASA as an Indian payload specialist in 1985. Unfortunately, the program was abandoned due to the explosion of Space Shuttle in 1986. This was a great disappointment in his life, but he took this as a challenge and decided to touch each and every part of the globe, if not space. He participated in Antarctic expedition to witness the Aurora Australis, the polar lights at Esperanza Research Station. He was launch and mission operations team member for more than 30 satellites launches by GeoSats, INSATs, and our NSS series of satellites. He has contributed for setting up American Station and Master Control Facility, MCF, Hassan for GE American Satellite. He has visited to witness the Coriolis effect of Earth on the equator passing through Kenya, Uganda, and Ecuador. Visited many of the active volcanoes of the world. Lake Melchior is a volcano on Tonga Island, South Pacific Islands of Vanuatu. Mount Ragongo is an active volcano in the Democratic Republic of the Congo, Masaya volcano, Nicaragua, so on. He was also honored by Greenland TV Media on his 100th country visit to Greenland, where he had gone to witness solar flares effects, Aurora Borealis, Northern Lights phenomenon. He worked as flyby coordinator during launch and early mission operations with international satellite agencies like Intelsat, Inmarsat, Japansat, SES Americom, Lockheed Martin, etc. What was a breakdown in his life in 1984, unable to go to space? Became a breakthrough in 2014 on 15th August, that is India's Independence Day, when he became the first Indian and 259th person in the world to go to the stratosphere as a tourist from Russia. This information was not covered by all leading newspapers and TV channels in India and abroad. He experienced the second space mission of zero-gravity flight from Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia. Suresh Kumar is an avid traveler. As mentioned in one of the media, he has left his birthplace on more than 153 countries covering all the 7 continents of the world. He is the first Indian scientist to travel the stratosphere, the edge of space, from Russia as a tourist. He is the first Indian to experience zero-gravity flight from Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, as a tourist. He is the first Indian to explore Sahara Desert and Nadi Plateau. He is the first Indian to reach summit of Ragongo active volcano, Congo. He has carried out tests of anti-gravity, magnetic hill spots.
He has visited many scientific and rocket launching stations like European Space Agency ESA, Ariane 6 rocket launching station in French Guiana, Soyuz launching pad of Roscosmos, Vega Control Center, Sopolare Base Disney, Novgorod, Jupiter Mission Control Center, Kourou, French Guiana, Time Study Observatory at Royal Museums, Greenwich, London, Belgacom Spaceport in Lausanne, Belgium, Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, Solar Observatory, Siberia. In recognition of his achievement, Suresh Kumar has been honored and awarded by many educational institutions and organizations. He was cited in hundreds of print and television media, both in India and abroad. He has been conferred with honorary doctorate in Doctor of Telecommunications by Los Angeles Institute, and he got his second honorary doctorate in Doctor of Space Science by Commonwealth Vocational University. Dr. Suresh Kumar was at Chernobyl nuclear power site in Ukraine on study of eradication of coronavirus by use of radioscience and gamma-ray radiation technique. Dr. Suresh Kumar was nominated by Emily Charles for India Award for the year 2021 for his contribution to lifetime achievements in space science. Dr. Kumar was on study tour to know exceptional rock formations in Wadi Rum Desert of Jordan in March 2022. The science behind this exceptional combination of landforms, how it has developed, is the result of millions of years of ongoing evolution. It clears the various factors, including the various types of. Suresh Kumar gives talk shows in institutions and organizations for the benefit of students and participants. Dr. Kumar honored with Trailblazer Award for the year 2022 at Mumbai by ABCD International Institute. He became a chief advisor for Vyomika Space Academy, India's first space school VSA, New Delhi. He became a member for the Space Generation Advisory Council in support of the United Nations Program on Space Applications. He was offered to be a Senate member for International Internship University, New Delhi. He was a chairperson on panel discussion of International Innovative Future Education Summit 2022. His hobbies include sharing and educating about space and earth science in educational institutions, photography, videography and documentary, etc. To know more about Google, TN Suresh Kumar. YouTube, TN Suresh Kumar.
We'll go, sir. Sir, you be here, let the audience be standing. I saw the tricolor in your hand when you were on the edge of space, and I could feel, I could pray, I could I could go into the deepest emotion and brought out 4 lines. दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना, चाहे जन्नत ना अता करना मौला, शम्माए वतन की लौ पे जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। तो हाथों में तिरंगा लेकर के one of the greatest scientists of India, Dr. T.N. Suresh Kumar, sir, we want to listen to you. जोरदार तालियां सर के लिए, सर। Dr. T.N. Suresh Kumar, sir. Very good morning to all of you. Oh, thank you. It's a customary wherever I go. First and foremost, I would like to give my respect to Mera Guru, Mera Senior, and our fellow ex-president of India, late Dr. Abdul Kalam Sahab. So, my dear respected father dignitaries, आपका जी का पेरेंट्स, कल से बहुत खुश हुआ आपको देखे। 3 बार आपने बोला किसान का बेटा हो किसान, मैं इतना खुश हो गया। लेकिन आपका नाम जो रखा है ना आकाश, वो आकाश तक जा सकता है। आपने 25 years का पहले ही आप सोचा होगा मेरा बेटा आकाश तक जा सकता है। वो अच्छा नाम किया है। And it is a beginning. You are going to do a lot of things. I see a lot of potential in you. श्रद्धा होना चाहिए। And then when you are doing something, you must always close your ears. It's my advice as a senior. It's a suggestion. And keep doing that. Sometimes what happens, somebody will appreciate, खुशी हो के गलत कर देता है. Somebody will discourage you, lose your confidence. Close your ears and start working. When you achieve your target, then open ears and close your mouth. Others will talk about you. Actually, ये मेरा नहीं है, ये मेरा माँ ने मेरे को सिखाया। Maybe 60 years back, just small one. So it is already fit in my mind. So wherever I go, some of these things, don't take it as advice. It's my friend decision. Okay, friends, all the respected dignitaries and my dear friends, and I only know some few people here. When you saw the introduction video from Talion say both packages here, I'm very happy. ये साइंटिस्ट लोग है ना, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। And then आप रॉकेट की फिल्म देखा होगा कोई? These are all the real story. We don't know what we are doing. Morning I was talking to Dr. Prateek Ji. I was in a mission in Canada, but my father died. I was not able to come back. So same thing happened to Nambinarana. Same thing happened to Guru Abdul Kalam Sahab. Launching हो रहा था, तो महादेव ने कहा, no, this is more important. That can wait. That's the kind of approach we have. वो चीज़ हम में से क्या होता है, स्टेल कम रहता है, पोस्ट कम रहता है। We are not Shahrukh Khan, we are not Amitabh Bachchan, we are not Salman Khan. We are just ordinary people, and our work should. We always think that we should do something so that it should help with the common man. It is not that only Indian scientific. Any scientific person thinks there. He thinks that Vasudhaiva Kutumbakam, the whole family is mine. When Edward Jenner invented a vaccine for smallpox, वो घर में नहीं रखा. Or John Salak, when he put this pulse polio, he not kept. अगर वो घर में रखी तो वो would have become very rich man. But all of us would have been लंगड़ा. No, वो ऐसा नहीं सोचा. पहले उसको third world country को भेज. Somebody will do something. This is a kind of approach that makes us feel that we are always smart. So when I saw this one, I'm very very grateful to all of you. तालियों से. लेकिन आप में से ये क्या दो सोचा होगा? सुरेश कुमार बहुत बड़ा काम कर दिया. It's a great job. Oh, more than 150 countries. It's going to become 167 in next 1 month. Tomorrow I'm going 50 countries. Every tomorrow. 15 countries close. So, all like this, zero coordinator.
thousands of students, IITs, NITs, or more than 30 satellites vision operation. ऐसे सोचा होगा, लेकिन मैंने मुझे तो ऐसा नहीं लगा. I never felt that I've done something great. Because I'm an ordinary man, of a very ordinary man from a lower background. मेरे जिस आप भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. ये नहीं होना आपके पेट. I think it's but you should always think that I can do something. लेकिन मैं हमेशा tell you, I'm not done for any effort. Only British लोग ऐसा करते हैं. I'm not done for anything. Just keep doing the work and start getting the cards. And then even after doing 110 countries data, I was not told anybody. And then some people came to me and all media people came to what sir, you're going to speak, you're not trained. It is no, we will take like that it starts spreading. So what happened when you start? I don't know, you keep doing that. And every see, let it be 25, they will become 75, they will become 125,000. You will go. Don't look at you, just look at the target. This is what generally I want to tell people. These two things I always say. Okay, fine. Coming to today's program. I always address the people with scientific ability people, our students, or the projects. But today I'm addressing totally a different kind of personality, authors. Actually. I have written a lot of books on, not books, sorry, on articles or on technical reports about satellites and its performance report, annual report, video analysis report, but I never written any books. So I'm very glad to be with all of you in this wonderful morning. अरे अलग सा फील हो रहा है. वो जब मैं स्टेज पे गया, वो मेरा दोस्त था, वो मेरे साथी वाला वो. Kumar, just see that. You see the stars there, the background. I'm seeing the stars here. Wow. That is amazing. ऐसा लगता है हमेशा when see some people when they clap and then they see the face, बहुत अच्छा लगता है. It's really enjoy. And then people say people are going to temple to see God. I don't personally don't think be a scientific person. I'm not against God. I like God. My God is my mother. She has given such a birth for me. I'm able to do all this. With that too, with such a poor background, you know. So that's one thing. Second thing is, if at all if you are respecting this, they never told she is a first Indian. She not told first Suresh Kumar. You know? That means it's all credit should go to Allah. I only a cut through miss out. When I karwai mera sir. I only did, but all regards goes to you. So that's one thing. So all of you have written very wonderful books. You're going to see that. But I have never written any preface for a book. I have written forward. Forward maker was actually somebody written a wonderful book. Go through it. Some good points is there. Tell people, look, this is the place you should see. This is a movie you should see. It gives some menace to the family. This is a movie you should go and see. Take these children and show them. They will become tomorrow's society. They are your scientists. I mean, not very. This is a kind of thing which we write forward. Like free face, free face is only you can write. So I stand very small in front of our because a book लिखने के लिए is not that आसान है. Because you need to have some motivation. You need to have some inspiration. You need to have some insight. Somebody written a very good book when they got insight. Somebody done a great job when they got the failure in their life. This thing happened to me also. When I was not able to go to space in 1984 from ISRO, if that would have happened, I don't think these videos are recorded. That would have Suresh Kumar and Amitabh Bachchan would have happened. That had not happened. Then I had to work hard, day and night, then to go to space. So I had done it of 30 years of dream. So you should keep the dream, but dream not follow you to space. Today one book, 25 books. And then today if I sell only some 25 copies, it will go. It will go. Harry Potter the book देखा ना रात पर दिन भर people are standing in queue to buy it. That's the kind of target we should have. It's possible. So this is what I'm very happy to meet all of you in this wonderful morning, and I want to really meet each one of you what you have written, try to understand. It's not my subject. Second thing is the most important thing I want to use. I don't take much time. This we have several years to do this other thing also. It's a anchor जी बोल रहा था बहुत अच्छा हिंदी बहुत अच्छा इंग्लिश and wonderful voice. मैंने सोचा अमिताभ बच्चन क्यों इधर आ गए भाई? I don't know. His voice is so tremendous. The expression is amazing. I don't know your names up here. Prince Loverson. Fantastic. Yeah, Prince. Fantastic. So the presentation was fantastic. So then, very idea is that what we said is there's a development happened. Yes, to development happened. What development happened? We should try to tell our people who come from farmers. Each one,
वे लाइक बैक इन 1978 में एक भी सैटेलाइट नहीं था, हम लोग बहुत कष्ट कर रहे थे। बेंगलुरु टू अहमदाबाद जाने के लिए 3-3 दिन लग रहे थे। ये टिकट बुक करने में सुबह जाके 7 बजे को 4 बजे को लाइन में खड़ा के एक टिकट ले रहे थे। आप देखिए वेट अगर तो फंक्शन हो रहा है सीधा देख रहे टिकट बुक कर। नॉट बॉम्बे टू कलकत्ता, स्पेन टू बार्सिलोना टू this one, that's the kind of weird for all satellites. We have done the satellite. You people do not know that. एक शाहरुख का फिल्म आ गया 100 people run. फिर कलम सब किसी को नहीं जानता वो अच्छा आदमी है वो क्या क्या है that is the problem with India. So he brought the seen rocketry just by both of his bird crore millions of $1 equipment he give free of cost. Just see that the yard Indians इतना काम कर रहा है यार we should they're poor but they have a brain. So we sold the brain and got back this way. This place if you are not seen please see आराम से देखिए बहुत अच्छा है. So like this what happened जिंदगी ऐसे स्टार्ट चालू हो गया. Then one salary we used to get very small amount 760 rupees maybe movie or sleeper maybe get 10,000 rupees in Mumbai. For that we have to go to this one DD लेने के लिए दिन का program after every month salary लेने के बाद sir tomorrow full back work. फिर जाके वो चाल लेके DD लेके then post office जाके it will come 3 years 4 years. But see the satellites UPA just go to Panipati where tax आ गया सब पाएगा. You will not even see us with the this is what happened. These are public. These are the satellite issues that we provide. They're working day and night to get this. Now we have 30 satellite. And now when content I have कितना go to studio booth and then we are standing at 10 o'clock का बाद में थोड़ा कम होता है यार बिल्कुल we stand there and then sir and more than talking we'll be seeing the meter पैसा कैसे कर रहा है भाई. This is the feeling. Now you see you not development you not the I say, okay, just go and then come and then go to Australia. Array, the function of life, will catch up. So this is called development. वो 70 years क्या है? Then coming to this one, array, you want to go address somebody will ask, no, इधर चाहिए, no, इधर चाहिए. So much struggle we are saying. And then some भाषण नहीं आता है, तमिल वाला दिल्ली चला जाता है, बातें करता है, इधर आके उधर जा रहा है, उधर काम. Now all the fellow who has not gone to school, unpad, auto driver, कहाँ जाने का go to Mumbai and Delhi, auto meeting check, सब आपका है in Google. So all they happen because of satellite. 36 satellite, 64 satellite, we are putting all around and going 24 layer and we sending the data and we are putting it. Without your knowledge, this is called development. Development not that only we start putting makeup, that is not development. This is not development. Only this, but this type of thing happen. So the education field, बच्चों को पढ़ाई नहीं करते. Only some Indian state में more of engineering करें. Only elite people is to go, अरे engineering छोड़ा यार, medicine तो छोड़ा यार, only ये हो सकता है. But it's not happening. Now the digital education has come. You can sit here and learn things. Digital libraries have come. You can sit here and read the books in California library, MIT library, you can read. So this is called development. So like this, and also one thing I would like to say that, whatever way, पिछले पुराण में सुना होगा, राम जी ने भूलोक में बैठ के, युद्ध में युगलोक में बैठ के, कृष्ण जी ने देवलोक में बैठ के बात कर रहा था. Then coming to teleconference. Now video conference we are doing. See, just sitting here. Oh, I am sitting in this daily program. You just see, take a picture, take a video. I am going to Spain and showing the Spain itself. My mother is sitting here, not even good. So what happened? बहुत कुछ काम किया है, बहुत काम किया है. If you are respecting me, all not slowly to be respecting. And अब कुछ बोला था नहीं पर कुछ बोल रहे थे. वो हमने पहले करके दिखाया. There was one team in 1989. वही के प्रोजेक्ट हो गया. सब लोग चला गए थे. पैसा ज़्यादा लग रहा है, जाएंगे. Then close friend Dr. Kanrajan, very efficient. सब जगह हम बोला, भाई we have to stay there यार. अरे we are only some quality people. And we are only getting the facilities for doing now. We get equipment, 40 lakh measurement machine instrument होता है. ये सब government ने दिया है. If you also go away to America and everything, what is this यार? No यार, getting 7 lakhs rupees will go. 7 lakhs they left it gone. Then one team said, no, I will not. We'll stay there. Then one team started saying, we'll stay there. Then we made very first mission to Mangal Sector. Whole world starts seeing it. That is called every 70 years. What if that is the change? That's what I want to say. आपने जो बोला है, practical exam बनता है. वो दिन तो actually हम लोग satellite को साइकिल में लेके जा रहा था. अभी देखा एक बार satellite we are taking a bullet cut. पर vibration test. We want to check ये vibration के बाहर निकलना चाहिए. इसके लिए testing होता है. So we have no big equipment to test.
which is very good. Like you better see, no? We have to import very expensive. So ऐसा कर गया, ऐसा तो करके यार. Now we are launching satellite for somebody. Just 1 month before, 3 satellites we launched for Singapore. That is what. Now ये वो दिन का actually we are purchasing the Hatyar, there is arms ammunition from Russia and France and US. They tell us now we are selling this Vietnam and Malaysia. They are coming for 3 BrahMos मेरे को. We want we have proved and we want to fight back in China. दो आदमी झगड़ा कर रहे 300 रुपए का India को पड़ेगा. These are all because of hard work we are putting this country. जो पानी डालते एक जैसे बोलता है एक बुढ़ा था वो कुछ he was putting on plant and somebody came अरे आप इतना 70 years हो गया क्या कर plant अरे ये plant ऊपर होके बनाने में हम देने में takes 40 years आप जितना नहीं रहता है मैं जानता हूँ बेटा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे कोई किसी ने किया होगा now I am meeting you so I will do that so then all together all get together senior Vikram Sarabhai all Abdul Kalam sir all the other ones all our I mean they all done really hard work we don't know what to do so today we are meeting together बच्चे लोग जाता है रिजल्ट कर रहे हैं but इसके पीछे क्या है how it is happening how you want to take the money see earlier days you go and then take a travel check and give money there and you stand in पैसे नहीं है I am having a card and go to Germany. My account is in Mumbai. I am taking trying money somewhere in Germany. And then within 1 hour, I take a flight, go to London and draw homes here. Draw. Everything is happening. Everything it goes to the satellite. 56,000 kilometers. Okay. This per day. So much development happened. More for example, even in medical field, there is a lot of people there. You ask some senior people. If play again, पूरा family used to die. No, ऐसा नहीं है. अभी देखिए, कोरोना last year, just 1 year back, we were scared. I'm a student. Nobody is having mask. We are not taking it. We are not developing. How we conquer? We are together. We are doing. Last year I was here in 2 years back, ABCD program. मेरा एक follower is my Devta. I believe that whoever follows me, they are my real God. Because I can see them. God I have not seen. I've seen them, that's why I call them my God. I see Abdul Kalam say I call them my God. Because I've seen them. See, scientific commission committee always depends on 5 things. Panchbhut different, Panchchendra different. Panchbhut में क्या होता है? Everything is see. For example, pani, water, this one there, and apparently Akash level. That is all things which you compare. They scientific science will think that everything is in the body. He thinks everything is there. If you say scientist, he will say Panchchendra. I must prove whether I not gone to America, but I want to see a proof. I want proof. I want to feel it hot or not. So she will try to compare everything Panchchendra is there. No, I did there. So yeah, I can see. Like, so this is how they get different. But if you see the chart again, it's your enough 1, 2, 3, 4. Four is there, and what is distributed body? Here also, all the 4, like water, fire, and wind, what else? Wind. All are in this. Only one is in the Akash. Because in Akash is distributed. You understand? That's so the science what it says is, even the concept is there. Up to which idea has, please, we are open. If you go to a politician, or if you go to, I'm sorry, no politician here. All of we don't think something good in you, please tell me. I want to learn. This is the openness we make to them. So, हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, you keep your open. Don't say, my only right, my book is the best. Don't take the book so much. इसलिए always I am not right. So when I ordered him, Suresh Kumar, he said that I बोल रहा है, अमित क्यों नहीं कर रहा है? That is what I want. I want to inspire you. I want to put that. You also should, and you should do much more than other day. I would like to sit and watch that. That is my idea. This is what I was saying today. नहीं तो मैं अगर नहीं ले तो बात करते रहता हूँ फिर property of Suresh Kumar he continues for years here. So I want to conclude that. Very happy. You the small gathering, very good gathering. And it's a lot of energy. All good. 20 minutes. अगर कुछ आप में से ये क्या तो कुछ करने थे मेरा जीवन सफल हो गया. I'm very happy. Thank you. साथियों हम सुन रहे थे डॉक्टर टी एन
सुरेश कुमार जी को, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच. The development, what we talk when we say we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, he has shown that ये development, the satellites which have been launched, उसकी वजह से जो digital changes आए हैं, the Google, the instant payment, the instant ticket booking, everything has become so easy because of the satellites, the scientists community who is working very hard and behind the curtain, as Sir was saying. And the man who founded ISRO, Dr. Vikram Sarabhai Pawar, who was the second chairman of Atomic Energy Commission. And I come from the same community. I am working for Department of Atomic Energy, sir. So, feeling very proud to listen to you, sir. And it was an honor. It was an honor to listen to you. चलिए साथियों, सर ने कहा कि बहुत सुंदर चेहरे और जो ऑथर, ये आवाज इनकी कहाँ से आई? आना दोस्त, ये कैसे सभा में इतने शोर हो गए? Actually, this mic got inspired by you, sir. Now it is making so much of noise. जी, अभी नहीं, अभी भी नहीं. Thank you दोस्त. अभी मेरे को लगता है कि ठीक है, लेकिन आवाज पूरी बंद हो गई. अभी आवाज आ रही है. परफेक्ट. ओके दोस्त, आपका नाम बताएंगे? संदीप जी के लिए जोर चढ़ा दिया. ओके, सो कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं सर. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंस्पिरेशनल वर्ड. हम आगे चल रहे हैं और हमारे बीच एक और साइंटिस्ट हैं, हम कह सकते हैं, एक और ऑथर हैं, हम कह सकते हैं, और एक और ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमें मोटिवेट करने के लिए आज हमारे बीच में है. द मैन हु हैज बीन इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ रोबोटिक्स and who has been into the space science also, and he is none other than Shri Ravi Shankar. आपका स्वागत. और मैं दिनेश गुप्ता जी से पहले गुजारिश करूंगा कि रवि शंकर जी का पहले सम्मान हो, जैसे कि हमारी प्रथा है, परंपरा है. भारतीय संस्कृति हमारे अतिथियों को देवता तुल्य बनाते हुए उनका सम्मान करना सिखाती है. और उसके बाद फिर हम जानेंगे रविशंकर जी के बारे में. फिर हम जानेंगे कि रविशंकर जी को क्या कहना है, क्या सुनाना है और हमें क्या सीखना है. और ये दस्तार, इसे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में हम पगड़ी कहते हैं. और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी शोभा है ना, हमारा मान, हमारी शान, बान शान. जी हाँ, आकाश जी और दिनेश जी शॉल उड़ाकर, श्रीफल देकर सम्मान करते हुए रविशंकर जी का. जी बहुत शुक्रिया सर. और आकाश जी, फिर हमारे पास कुछ वीडियो है सर के लिए, या हम सीधा सर को आमंत्रित करते हैं, है ना? मुझे लगता है कि सर भी इस तरह से थोड़े से संदेह में है कि मुझे यहाँ जाना है कि वहां जाना है, क्योंकि हमने उन्हें बताया ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है. हम कैसे बताते हैं? जब हम जोर से तालियां बजाते हैं. तो क्या मंच आइएगा प्लीज. ऑडियंस इज ऑल योर्स. थैंक यू एवरीबॉडी. सबसे पहले मैं बोलने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग इसलिए गैदर हुए हैं कि हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं. अगर हमारा भारत देश नहीं होता तो हम यहाँ पर होते नहीं. और मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि मैं बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं आकाश जी से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ. और पीके राजपूत सर वो काफी मोटिवेट करते हैं, हर दिन मोटिवेट करते हैं. रात का 2 बज जाए, नाइजीरिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, तो एक बार वीडियो कॉल करके मुझे इग्नाइट कर देते हैं, थोड़ा काम कर लो. और मैंने सुरेश कुमार सर से कभी मिला नहीं था, बहुत कुछ देखा था उनके बारे में. एक बार हम एक अवार्ड फंक्शन कर रहे थे, तो आकाश जी कुछ फंक्शन उसके पहले किए थे, तो मैंने बोला मैंने एक स्पेस साइंटिस्ट को देखा है, काफी अच्छा बोल रहे थे, थोड़ा आप उनका नंबर देंगे क्या मुझे? तो
प्रतीक जी और आकाश जी ने दोनों ने हेल्प किया और सर से मेरा कनेक्ट हुआ। काफी खुशी होती है कि आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल के मिसाल हमारा भारत ने बहुत कुछ किया है। हम भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपने देश के लिए। हमारी ये कोशिश है कि भारत का हर बच्चा सेटेलाइट बने। जैसा कि सर ने आपको बोला कि कुछ दिन पहले हम फोन करने के लिए एसटीडी बूथ पर जाते थे और वहां से मीटर देखते रहते थे कि कब कितना बिल होगा और हम काफी घबरा जाते थे अगर बिल ज्यादा हो तो कि इतना क्यों बात की। आज हम उस जगह पहुंच गए हैं कि लोग फोन उठाना नहीं चाहते हैं, मतलब सब जगह कॉलिंग फ्री है। और ये बस एक ही वजह से हुई है कि हमारे पास सैटेलाइट है और हमारे पास रॉकेट्स है। पूरा क्रेडिट जाता है हमारे स्पेस साइंटिस्ट का। तो हमारे साथ हमारी एक छोटी सी टीम है और हमारी टीम ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी प्रथम, अपने शो में देख सकते हो गूगल पे भी। तो हमने एक प्लान ऐसा किया कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर भारत का हर बच्चे को स्पेस साइंस में आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी तक 1 लाख से ऊपर बच्चों को हमने फ्री में एजुकेशन दिया है। आने वाले दिनों में हमारी टारगेट ऐसी है कि हमने एक स्पेस लैब भी खोल लिया अभी छत्तीसगढ़ में और कोई भी मतलब हमारी कोशिश है कि हमारे 28 राज्य हैं, हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश 2 और बढ़ गया जम्मू कश्मीर। तो सब जगह हमारी स्पेस लैब हो और बच्चों को फ्री में सैटेलाइट ट्रेनिंग दी जाए। और आकाश जी से मैं जुड़ा था वर्चुअली और आपने जनरली आप देखते हो कि मैं प्रोग्राम करवाता हूँ पर मैं दिखता नहीं जो हमारी लोगों दिखती है। तो आकाश जी एक्चुअली में पटना काफी दूर है यहाँ से। आकाश जी काफी हमसे क्लोज है। मैं जनरली किसी प्रोग्राम में नहीं जाता हूँ, आपने कभी देखा नहीं होगा। तो क्योंकि वो बहुत मुझसे क्लोज है इसलिए मैं यहाँ पर आया। 2 दिन पहले उनका फेसबुक पेज में देख रहा था, वहाँ पर देखा कि द जर्नी कंटिन्यूज। आप गेस कर सकते हो कि किनका डायलॉग है। तो मैं देखा वो भी आ रहे हैं और रचना मैम मेरे से काफी क्लोज है। काफी कुछ उन्होंने फाउंडेशन के लिए किया है, मतलब डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो भी आ रही थी तो मेरा और क्या बोलती हूँ अच्छी बात है कि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करें कि सब कुछ तो कर नहीं सकते ना अपने कंट्री के लिए, थोड़ा जरूर कर सकते हैं। और आप में से हर इंसान में एक यूनिक टैलेंट है, सब लोग कंट्रीब्यूट कीजिए और कंट्रीब्यूशन के पीछे मत सोचिए कि हमें क्या मिलने वाला है। हमें आज तक कुछ नहीं मिला और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि हमें अगर हमारा देश डेवलप होगा सबको फायदा होने वाला है। आज यहाँ पर हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे कंट्री ने इतना डेवलपमेंट किया है। मेयर हॉल बन गई, अभी कुछ नहीं था भारत के पास, आज भारत है जो बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत खुशी का दिन है और खास करके जब कंट्री से रिलेटेड कुछ चीजें होती है। प्रोग्राम का नाम ही था आजादी का अमृत महोत्सव। तो मैं घर में नहीं बैठ सकता हूँ उसको, क्योंकि जब भी हमारे देश की बात आती है तो मेरे अंदर से वो अलग ही फीलिंग आती है क्योंकि मेरे फैमिली वाले सब आर्मी से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा डेली बातें होती थी कंट्री के बारे में। प्रतिभा मैम मैं इनको जानता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। मैम भी काफी अभी इंस्पायर करती है। अभी 2-3 बातें उन्होंने बताई जो मैं आगे फॉलो कर रहा हूँ। अच्छी बात है और सब लोगों को चाहिए कि जैसे आकाश जी ने आज प्रोग्राम किया, हम सभी लोग देश के लिए ऐसे योगदान करें और जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि देश ने हमें क्या दिया, हम क्या देश को दे सकते हैं। फीलिंग हर इंसान के अंदर होनी चाहिए और आप अगर ऐसी फीलिंग रखते हो तो हमारा जो भारत आज वर्ल्ड का 4था सुपर पावर है, अगर हम सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो मेरा भारत जो है, हमारा भारत वर्ल्ड में नंबर 1 भी बन सकता है। क्योंकि मुझे याद है मैं 2 दिन पहले दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका को गई तो उन्होंने कहा कि गेहूं की थोड़ी कमी हो गई भारत में क्योंकि हमारा वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ, एक्चुअली बांग्लादेश के साथ था, इंडियन वॉर में। तो अमेरिका ने बोला था कि वहाँ के न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी कि भारत भिखारियों का देश। लेकिन 2022 जब आई तो क्या हुआ कि यूक्रेन के साथ युद्ध चालू है। अभी सर से मैं बात कर रहा था उसी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट देखा।
उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत ने कहा कि मैं गेहूं का निर्यात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं की कुछ जरूरत है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े पॉपुलेशन वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बात बोली कि नहीं, भारत को कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि दुनिया में खाद्य संकट आ गया है। तो हेडलाइन चेंज हो गई थी और क्या बोल रहे थे कि दुनिया में अगर कोई इस संकट को उबार सकता है तो है इंडिया। ये 75 ईयर का अचीवमेंट जिस अमेरिका ने हमें भिखारी बोला था, आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई गेहूं दे दो तो हम लोग का भोजन चलेगा। यस, ये है हमारी इंजेक्शन दे दो। सर ने सही कहा, कोविड कितना जबरदस्त डेवलप 6 महीने में हमने पूरा इंडिया को वैक्सीनेट कर दिया, पर मास्क लगा के लोग नहीं रहा। सब छोटी छोटी बातें हैं जो अपने देश ने बहुत प्रोग्रेस किया है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देंगे। बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 24 घंटे में से 5 मिनट देश के लिए जरूर कंट्रीब्यूट करो, तो इंडिया बनेगा, हम सब बनेगा। जी बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। और आपने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, देश के 75 वर्षों के इतिहास को संजोते हुए इंडिया को कभी भिखारी कहा गया, लेकिन आज हम इस स्थिति में है कि हम पूरी दुनिया को दान देने की स्थिति में हैं। फिर इंजेक्शन की वैक्सीन की सबने बात की, उससे पहले भी पंचभूत और पंच इंद्रियों की बात कर रहे थे। वही अमेरिका जो हमें कुछ नहीं आता था, वहीं पर ही विज्ञान को और वेदांत को, अध्यात्म को साथ लेकर के हमारे यहाँ का एक छोटा सा संघ जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जब वो अमेरिका में गया, शिकागो में गया, तो पूरे धर्म गुरुओं की जितनी भी संकल्पनाएं थी सारी परिवर्तित हो गई। तो ये हमारे देश की धरती है, ये हमारे देश का विज्ञान है और ये हमारे देश का अध्यात्म है, जो निश्चित तौर पे भारत को विश्व गुरु बनाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। और मुझे अपनी जानकारी इधर से आई है, वो कुछ और है, उधर से आई है कुछ और है, दोनों के बीच में हम चलते हैं कि एंथोलॉजी क्या है? क्या है संकलन? सर एक मिनट, आप जानते हैं सर, आप देखिए, हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। शुरुआत में आकाश जी जब यहाँ पर थे तो उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसी परंपरा शुरू की है। 75 लेखकों ने 75 of the authors have given their articles to be compiled in a book which is known as anthology। जो हमारी पुस्तक का संग्रह बना है, उस पुस्तक के संग्रह को अब ये सही वक्त है कि उसका विमोचन किया जाए, कि उसका अनावरण किया जाए। It is high time to unveil the book, isn't it? And we have the great people among us, so what not? Let us clap once again. Let me request Rachna Chakraborty to kindly accompany the dignitaries, unveil the book, and then you will tell about the same. Rachna ji, please. आदरणीय डॉक्टर टी.एन. सुरेश कुमार जी, श्री रविशंकर जी, श्री प्रमोद कुमार राजपूत जी, मैडम प्रतिभा मिश्रा जी, दिनेश गुप्ता जी, आकाश जी, आकाश जी, आपकी याद में हम ये सब करेंगे बाद में, आइए। और ये यही रखा जाएगा और मुझे यहाँ से हटना होगा ताकि ये दृश्य जो है और स्पष्ट हो जाए। माइक को मैं ऑफ कर दूं और मैं साइड में जाऊं, इसको भी हटा दूं। ओके, हम सब मल्टी पर्सनैलिटी हैं, इसको भी थोड़ा सा कर लें जी। मल्टीटास्किंग इज द नीड ऑफ आर्ट सर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, राइट? थैंक यू वेरी मच सर। एंड जी रचना जी, आकाश जी की माता और पिताजी, प्लीज प्लीज ये शुभ अवसर आपके हाथों, आपके कर कमलों के बगैर संभव नहीं है। कृपया मंच पर पधारिएगा। और रोशनी जो है वो हमारे हॉल में जितनी है उससे ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि उज्जवल चेहरे हमारे बीच में हैं और मोबाइल की जो रोशनियां है, देखिए वहां से फ्लैश लाइट, यहाँ से फ्लैश लाइट, तो ये रोशनी जो है हमारे सभा में भरपूर है और ज्ञान रोशनी का ही प्रतीक है, प्रकाश का ही प्रतीक है। तो ज्ञान की इस परंपरा को, अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बोलना बंद करूं तो आप लोग इस ज्ञान के प्रकाश को चलिए अनावरण करें। रचना जी आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करेंगे सर कृपया अपने कर कमलों से इसका अनावरण करें। जी माता जी, पिताजी,
मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अतिथि महोदय, इधर देखें, सी हियर, सीधे बगा, ऐसे देखो। जी मैडम, आपने बिल्कुल। Yeah, so this is the grand. Okay. ये ठीक है, हाइट के हिसाब से लगा हुआ था। अमिताभ जी बोल रहे थे तो अभी जया जी आ गए तो वो एडजस्ट करना जरूरी है। So we all know that literature is the main motion of the country. The famous quote, "Fame is mightier than sword." So here you can see that the congregation of 75 ambassadors who had written and made this book successful. So the grand launch today by principals, by ambassadors who have collectively thought about our country from way back, and they have brought out all the achievements of our country from 1947 to 2022. The book is having every year synopsis of its achievements, what India has done, which we have long forgotten. So right now it is the time to remember our country and spend at least few moments with just now engineer Ravi Shankar Kumar had said about it, that 5 minutes हमें निकालना है only for our country. अगर हम ये कर सकते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर हम देश के लिए सिर्फ 5 मिनट अपने कीमती 24 hours में से निकाल सकते हैं, so we'll surely reach that target which we all have expected. So on that note, the great book launch, that is the Azadi Ki Amrit Mahotsav Growth Achievements Bright Saga of the country has been inaugurated by all the stalwarts across the country at gathered here under the guidance of Bhabur International Publication. Bhabur International Publication has been collecting so many group of authors who have already published their books, and some will be published today, inaugurated today. So we can say a big thank you to Bhabur Publication, who has been motivating the writers to come up, open up their mind, and there is somebody who will be there behind to launch their books. So thank you so much, Bhabur Publication, and now I would request the co-authors, if you all are there, to please come up, the 75, at least we can have the co-authors also. Please do come up, who has written the book along with the guests. We would request all of you to please be on the dais along with our dignitaries, because you also are very, very important for our country. Azadi Ki Amrit Mahotsav, it's an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture, and achievements. Yes, yes, yes. You have to know, you have some press. And you know, I am sitting there because all the authors are bound there. Everybody's author. So somebody should be in the audience. Please, please. Yeah, and even I am also one of the authors. Yeah. So I am there behind the scenes. So yeah, I'm there. So it's okay, it's okay. So it's actually, I wanted to say about the contribution of Bhabur Publication, which is enriching the country's rich heritage. So the contribution of Bhabur Publication is utmost importance, because it is this publication which is encouraged to bring out India's prime importance. And we all know that writing develops that skill, and pen is mightier than sword. जो हम बोल के नहीं कर सकते, हम लिख के बताते हैं कि हम देश के लिए कितने बलिदान दिए. So I hope my Hindi is proper, because our anchor is there. So based on that, we will go ahead, and I'll also come for the.
बहुत सुंदर दृश्य हमारे सभी लेखक जिन्होंने आजादी के 75 सालों की दास्तान को एक एक पन्ने से जोड़ते हुए इस संपूर्ण पुस्तक का संकलन किया है। द विक्ट्री साइन, जी जी बिल्कुल सर, विक्ट्री साइन ये हमारी विजय है, ज्ञान की गंगा को बहाते हुए देश की उन युवाओं, उन प्रतिभाओं तक पहुंचाते हुए हमारे हिंदुस्तान की आजादी की गाथा को, गौरव गाथा को संकलन के रूप में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी गणमान्य जन कृपया अपना आसन ग्रहण करें। रचना जी बिल्कुल आगे की कार्रवाई बताएंगी। ये बहुत ही ग्रेट, जी बहुत शुक्रिया। और छोटे छोटे बच्चे जी, हाँ और बताएं जी आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, मुझे बताएं जैसा आप चाहें। बिल्कुल, लेट द ऑडियंस बी सीटेड देन आई शुड स्पीक। मेरा काम बोलने का है, मैंने बताया ना, मैं बोलता रहूंगा, आप अपना खींचो जितना खींच पाओ, नहीं खींच पाओ तो भी मैं नहीं भी खींचा गया तो भी चलेगा, मुझे बहुत खींचा गया है। सर ने बताया था कि अमिताभ बच्चन जितना लंबा हो गया हूं मैं खींच खींच के, नीड नॉट टू वरी, let my bites be there or not, it doesn't matter at all because like you people are important, so let the program go। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि समय हमारा जो है सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन धीरे 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 हम हिंदुस्तान का पहुंचते पहुंचते 11 सवा 11 तक पहुंचे। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा, हमारे रविशंकर साहब भी बता रहे थे कि हमें विश्व गुरु बनना है, सबसे आगे जाना है और हम हो जाएंगे। तो अब हम कार्यक्रम को थोड़ा सा तीव्र गति से शुरुआत करेंगे। और अब फिर हमारे बीच में गणमान्य जन है, सम्मानित अतिथि हैं। मैडम अगर मैं आपके बीच में बाधा नहीं बन रहा तो आप बैठ जाएं, बहुत शुक्रिया। सो हमारे बीच में सम्मानित अतिथि हैं, वी हैव अमंग अस डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत जी। वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, आकाश रावत जी और रचना जी और प्रीति जी संयुक्त रूप से मंच पे आएंगे, सबका सम्मान करेंगे। एंड देन वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत जी। और इस समय सर का सम्मान होते हुए सर अहमदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। अगर मैं सही हूं तो तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रमोद कुमार राजपूत जी का सम्मान होते हुए, ये कैडिला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, who started as a medical representative and fascinating about pharmacology. Now he is a doctorate in pharmacology. Heading Cadila company as vice president. और सबका सम्मान होते हुए I would request the guests if you can wear that and sit down. It's okay, it's an honor. Please be seated with that. Please be seated with that is okay. और सर आप यहाँ पर अगर बोलेंगे तो वीडियो जो है ना बहुत अच्छा आएगा। Please be seated with और अब जो है nice. सर एक और बात ये भी है कि अब जी So I would request all the guests, please wear their peta because that's a traditional Maharashtrian style. So I would request all the guests, instead of keeping it, they're wearing it.
जी So तो अब हम गागर में सागर भरेंगे, गागर में सागर भरेंगे। गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि थोड़े में ज्यादा कह देना। समय हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे पास प्रमोद जी है जिनके पास बहुत दम है। सर आपके वचन हम सुनना चाहते हैं, आइए प्रमोद जी। Thank you so much, Prince sir, and with lot of respect to sir, and with lot of love, affection to Ravi ji, lot of respect to ma'am and everybody here, and the pursuit of the knowledge and the glory of the God. I dedicate my this speech to all of you because whatever I am going to speak, it is my 40 years of the journey which I started and it's on going on. That's why I say the journey continues. बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज मैं सोच रहा था कि अगर सर के सामने बात करना तो ऐसा लगा कि जो है सूरज को दिया दिखाने जैसा था and really clap for you sir, my gratitude to you sir, because when we meet such a wonderful dignitaries and personalities, it gets lot of inspiration to us, right? That yes, there's a long way to go, there's a long way to move ahead. There are more things can be done. Age is not the limit. Age is not the number. Everybody, every person is having lot of potential to make the things happen. And that's what, when we come and when we listen to personalities like you, we feel inspired because you inspire us to make the things happen. So coming back to my small journey, I dedicate my this journey only to the 5 very, very important people in my life. Of course, everybody is very important and very much respected. The first is my parents because they have given me the value system, right? And because without the value system, I would have not grown to the position from the nowhere to whatever the small position which I am having. Second, I give this thing to my all the gurus because if the gurus they have not shown me the real path, I would have not further gone ahead on that. So that is very very important. I am very happy that so many gurus are sitting here. तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि गुरु को सबसे पहले वंदना है. So please accept my gratitude, my abhinandan to all the gurus, my respect to all the gurus in any capacity, in every capacity. The third is when I came to the professional journey, right? The people who are guiding me, they have guided me in such a beautiful way that I'm able to make the path very, very clear. And the next is the last person is my team, because whatever I am, without team I am nothing. Because their success is my success. If they are a failure, it is my failure, it is not their failure. That's what I have learned in the journey. So my journey started as I did my graduation, BSc, and my father, mother, and I'm talking about 1982. They were very proud because I was selected in the engineering college. तो उस टाइम ये होता था कि अगर बेटा इंजीनियर हो गया या डॉक्टर बन गया तो उन्होंने माता पिता ने 7 समंदर पार मतलब 7वें जग में चले गए. तो वो 2 दिन की खुशी अच्छी थी, but in 45 days of time I left that engineering college. I didn't like it. I didn't know, and I chosen this beautiful profession of the medical as by chance. Not by chance, but I chosen it. People they say that it is always happened with the chance. No. It is my chosen path. And I was very clear that there is nothing, there is never no in my life. Because I always believe that wherever there is the hurdles are there, it's an opportunity. And with that opportunity, I started working. And with one company, I have grown from a medical representative level to this level where I take care of the senior vice president of the company. And I take care for 25 countries. I have taken to my entire India. This is my journey goes on. And it will keep on going on. In between, I did my MBA. In between, I did my specialized course of IM. I did my 27 certification courses for the international university of the different parts of the world. And that's what it is happening. Yeah, we are proud to listen to you. So it keeps on happening, right? And after that, now my PhD is also getting completed, right? Which is basically on the domestic marketing versus the international marketing, which I'm going to get it, the final one in the month of November. At the same time, my gratitude to all the wonderful people who had come in my life. I got 10 honorary doctorates also, right? So that is also there. So this is the way it goes on. But मेरा simple फंडा ये है कि दूसरे को इंस्पायर करेंगे, दूसरे के साथ हाथ में मिलाएंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे. Because it is always good to help others. It is always good to learn others because in the entire
journey which I say the journey continues. Learning is one of the very, very important aspects because till the time the breath is, the learning goes on. And I am very happy and blessed. Thank you, Akash ji, for giving me such a wonderful, beautiful, nice, elegant, superlative opportunity for inviting me, because wherever such opportunity comes, I never say never no, because मेरी डिक्शनरी में दो चीज नहीं है, एक तो ना नहीं है और कभी जो है हारना नहीं मैंने सीखा है. That is all. Thank you so much. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. बहुत इंस्पिरेशन के साथ, बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ सर हमसे बातचीत कर रहे थे और बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों को हम सुन रहे थे. बहुत बहुत आभार आपका, हमारे बीच में आए. कार्यक्रम को आगे लेके चल रहे हैं. दिनेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं. सर, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं. आकाश जी, रचना जी और प्रीति जी कृपया मंच पे फिर आ जाएं संयुक्त रूप से, और कोर टीम के हमारे मेंबर्स जो भी हैं आए, और दिनेश गुप्ता जी का हम सम्मान करना चाहेंगे. ऑडियंस भी सम्मान कर सकती है तालियों के साथ. तालियां बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे सम्मान अतिथि के सम्मान में. और उसके बाद फिर हम जानेंगे दिनेश जी के बारे में, उनकी जुबान से उनकी दास्तान. प्रीति जी शॉल पहनाते हुए, रचना जी और आयुषी जी एक प्रशस्ति पत्र श्रीफल देते हुए, आकाश जी सभी भूमिकाओं में साथ रहते हुए, ऑडियंस ताली बजाते हुए. बहुत शुक्रिया. और समय हमारे पास कम है, पहले भी हमने कहा था, लेकिन हमारे सबके बीच में बहुत बड़ा दम है. फिर भी हम चाहेंगे सर, ये श्रीफल मेरे हाथ में और ये आपके साथ में. जी हाँ, हम चाहते हैं कि आप हम सुने. We want, आपके पास सर उतना ही समय है जितना आप ठीक समझे, है ना सर? बिल्कुल सर, आइए सर, आप आइए सर. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. पहले आकाश जी को धन्यवाद. और आकाश भगवत बुक पहले तो ABCD इंटरनेशनल के नाम से था. ये आज मेरा तीसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आकाश जी के साथ ये तीसरा प्रोग्राम है जहाँ पर मैं अपने विचारों को रख रहा हूँ. सम्मानीय हमारे आज के मुख्य अतिथिगण सभी जो सामने बैठे हैं, और सभी लेखक जो है, कहते हैं ना कि तीन काम हर इंसान को तीन काम करके जाना चाहिए. हर इंसान को 730 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और 730 करोड़ लोगों ने ये तीन काम करना चाहिए. सबसे पहला, एक पेड़ लगा के जाना चाहिए. क्या बात. दूसरा जो है, एक जनरेशन देकर जाना चाहिए, एक पीढ़ी देकर जाना चाहिए, एक आने वाली पीढ़ी को जन्म देकर जाना चाहिए. और तीसरा, एक किताब लिखकर जाना चाहिए. और ये बात मुझे 2002 के आसपास समझ में आ गई. तब से मैंने लिखना चालू किया और 2006 में मेरी किताब आ गई थी पहली, विजयी घोर, जिनको हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे सर, और उनको हमने भेजा. पता चला कि बड़ा आदमी बड़ा क्यों बनता है. वो रिस्पांस जो देता ना, एक हफ्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से हमारे पास पत्र आया कि आपकी बुक हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी को प्राप्त हुई और आप ऐसे ही काम करते रहे. बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. ऐसे बहुत सारी बातें लिखी जो आज में हमारे आप फ्रेम करके रखी गई है. तो आप लोग राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंच सकते, शायद पहुंच भी सकते, लेकिन आपकी किताब को कोई रोकने वाला नहीं है. आपकी किताब को कोई रोकने वाला नहीं है. आप कहीं पर भी जा सकते हैं. एक पढ़ा लिखा इंसान ना एक पद तक जा सकता है. एक पढ़ा लिखा इंसान एक पद तक जा सकता है. एक ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, वो किसी डिपार्टमेंट हेड HOD बनेगा, लेकिन एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है. एक कलाकार को आप कहीं पर पहुंचा दीजिएगा. हमारे साहब जो है, प्रिंस साहब है, कहीं पर भी, अगर वो तो है ऑलरेडी ग्रेजुएट भी होंगे, उन्होंने पढ़ाई भी किया होगा, लेकिन एक कलाकार कहीं पर भी पहुंच सकता है. अपने अंदर एक कला को जिंदा रखिए. जहां पर मैं आकाश जी को जब पहली बार मिला था, तो मैं हमारा एक प्रोग्राम था ताजमहल होटल में. हमने भी ऐसे ड्रीम रखा था कि चलो ताजमहल होटल में कब तक हम बाहर सेल्फी निकालेंगे, कभी तो अंदर लेके जाना चाहिए ना. राजपूत साहब, आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, कभी तो सबको अंदर लेकर जाना चाहिए. और उस समय हमारे आकाश जी हमारे साथ में थे और हमने देखी जो उनकी सिंपलिसिटी है, जिस तरह से उनको तो हमने बनते हुए देखा. अगर कल उनके ऊपर मूवी बनेगी तो डायरेक्टर साहब तो सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे कि बताइए आपने उनके बारे में क्या लिखा. हमने देखा है. और सर, ये जो जर्नी है आपकी, बहुत खतरनाक जर्नी है. एक कविता अगर आपके आगे हो तो, एक कविता ये विकास बंसल जी की कविता है, जिसको अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में सुनाया था, और जिसको मैंने अपने जीवन का हर जगह पर सुनाता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे.
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं सर, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में तप कर मैं कोई अंबानी और कोई बहुत बड़े ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ, बच्चन साहब के यहाँ नहीं पैदा हुआ। हम जिनके भी घर में पैदा हुए हैं, जिनके भी घर में हम, जिनके भी कोख में हम पैदा हुए हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि बंजर भूमि में तप कर मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हमको रोकने वाला हमारे अंदर ही, और जिस दिन उसको हमने ब्रेक कर दिया बस खत्म। लिम्का में जाना था, ब्रेक हो गया। गिनीज में जाना था, ब्रेक हो गया। जेव स्टॉक में जाना था, ब्रेक हो गया। टेडेक्स में जाना था, ब्रेक हो गया। बस आपको सोचना है आपको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। और मैं देखता हूँ सर, आपको तो मैं देखते रहता हूँ, आपको सारे के सारे लिमिटेशन ब्रेक कर रहे हैं। हमारा मैडम वो बुक देंगे ओएमजी का, सर का एक फोटो है ओएमजी का बुक है, देखिए यहाँ पर ये मेडल के नीचे, उसमें आकाश साहब को हमने सबसे पहले गिफ्ट दिया था। हमारा उनके मम्मी डैडी भी उस समय उपस्थित थे, और ये बहुत बड़ी बात है, ये तीसरा एडिशन है। राजपूत सर आपका भी इसके अंदर नाम आया हुआ है। हमने इनको कवरेज जो किया है, यानी देश की, हम भी ऐसे सोचते थे रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन रिकॉर्ड बनता कैसे है आप देखेंगे सर। ये आपका ही यहाँ पर पूरा ऐसे ब्रांड ही हमने आपको लॉन्च कर दिया यहाँ पर, क्योंकि सचमुच में रिकॉर्ड बनता कैसे है। क्योंकि रिकॉर्ड वो नहीं बनाते जिनके रगों में खून दौड़ता है। राजपूत सर रिकॉर्ड वो नहीं बनाते सर, रिकॉर्ड वो नहीं बनाते जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। और ये जुनून जिस दिन आ गया, जुनून जिस दिन आ जाता है, इंसान ये स्काई इज द लिमिट, आकाश में छोटा हो जाता है। वो आला आकाश, ये आकाश नहीं, वो आला आकाश इज लिमिट, स्काई इज द लिमिट जो बोला जाता है। बस आप लोग ऐसे लिखते रहिएगा। पहली किताब मेरी तो 16 किताबें आ चुकी है। मेरी किताब आज यहाँ पे लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इतना भागम दौड़ रहा था। अभी मैं कल रात को दिल्ली से यहाँ पर आया। उसके पहले सर से भी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, मथुरा में था, फिर उसके पहले हरियाणा में था, पंजाब में लुधियाना में था, भोपाल में जाकर आया, और यहाँ तक पहुंचा हूं। तो ये आपका प्रेम है सर कि यहाँ तक मुझे आपने खींच लाया। बाकी हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बंजर भूमि में प्रेम, बंजर भूमि में खेती उगा देता है, अनजान को रिश्ते में बदल देता है। दूसरों की नहीं अपनी कहता हूँ मित्रों, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो आज इसी मौके पर सर अनाउंसमेंट कर दे कि अभी जो मिला ही है तो अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। आज का जो कर दे आज के दिन जो हमारा, हाँ, ये जो 75 की जो आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, और ये यूनिक आइडिया है कि इन्होंने हमें पूछा कि हमें एक रिकॉर्ड भी बनाना है। हम आइडिया तो बहुत सारे लोगों को देते हैं, जैसे 750 एप्लीकेशन ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के पास आए हुए हैं। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड देश की चौथी एक बड़ी कंपनी में नाम लिया जाता है रिकॉर्ड्स की। लिम्का है, गिनीज है, और भी है रिकॉर्ड है, जिसकी किताब आती है, इसमें हम एंट्री देते हैं, जिसमें जो भी कुछ अलग काम करते हैं। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अब 2022 अब तक 1000 लोगों से ज्यादा इसमें नाम लोगों का सम्मिलित हो चुका है। और बहुत सारे, यानी हमारे देश के अलावा सोचिए, मुंबई के कल्याण छोटे से जगह पे शुरुआत करके, कल्याण किसी को पता है क्या, वहां से शुरुआत करके ये जो है अब ये दिल्ली को क्रॉस करके, नेपाल को क्रॉस करके, ओमान, दुबई, सलाला, फिर उसके बाद जीबीटी है, फिर बुडापेस्ट है, जर्मनी है, फिर उसके आगे यूएसए, सारे लोगों का नाम इसमें आ चुका है। यानी अब ये केवल लिमिट नहीं है, अब अनलिमिटेड बन गया है। और आज ऐसे ही एबीसी इंटरनेशनल को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मैम सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको। और ये सम्मानित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सचमुच में करके दिखाया। आज मुझे यहाँ पर ऐसे मैं इन्विजिलेटर बन गया, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। मैं मुझे ना अच्छा बोलना आता है सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वेरी स्मॉल। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम ITI टर्नर फिटर मशीनिस्ट। आई वाज ITI and I completed my diploma degree at IIT मुंबई से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इन एम्बेडेड सिस्टम। तो ITI से शुरुआत करके IIT मुंबई, फिर उसके बाद फिर जर्नी चालू है। द जर्नी कंटिन्यूज है। तो आज आकाश जी को एक सम्मान के साथ जो आज सम्मानित किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है, ये आकाश जी का सम्मान नहीं है, पहले बता दूं। आकाश जी का सम्मान तो है ही, ये उनका है जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने एंथोलॉजी लिखने में थोड़ा आंख अभी पहले जैसी नहीं रही है। बहुत 10,000 किताबें पढ़ने के बाद आंख थोड़ी सी कमजोर हो गई। 10,500 किताबें, एक रिकॉर्ड हमारा किताब पढ़ने के लिए भी हुआ है, किताब कलेक्शन।
Award International Publication and ABCD, International Family, Akash Bhabar, date of birth 4/4/96, Mumbai, being the 75th year of India's independence, it was celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. On this occasion, 75 brand ambassadors compiled 75 articles on the journey of nation from nine of rich heritage, development, growth, achievements, technology, culture. हमने देखा ना डेवलपमेंट क्या है, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई और वही इन्होंने लिखा है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स appreciates and recorded in edition 2022। सर जो 4th एडिशन आएगा उसमें आपका नाम हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐसे ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉट द नेशनल रिकॉर्ड, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हम ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित होने जा रहा है। ऑलरेडी 2 नाम आ चुके हैं सर, प्लीज सर आप आइए और आपकी टीम को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये केवल किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है सर, हम आपको दे भी नहीं रहे, ये नाम तो चलो किसी लीडर का नाम लिखना होगा ना, इसलिए लिखा जा रहा है, नहीं तो ये रिकॉर्ड 75 लोगों का है। अभी अपने पास टाइम कम है तो हम सिर्फ होल टीम को इनवाइट करते हैं और ये ऑफ कोर्स 75 ब्रांड एम्बेसडर्स को ही क्रेडिट जाता है, हम तो सिर्फ एक मीडियम है और हमारा ये इंटेंशन था कि उसके पीछे कुछ ऑथर्स की सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो, क्योंकि हमारा मिशन ही वही था कि 100 सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो। और अभी हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाने वाले हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बनाने वाले हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव अभी एक के बाद पूरा सब टीम इतने सपोर्ट करते हैं, अब जैसे लोगों का ब्लेसिंग से आशीर्वाद है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत अच्छे से हम 31st तक 1000 सक्सेस स्टोरीज तो क्रिएट ही कर लेंगे। जी जी साक्षी Towards right side. OMG yeah, that way. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. What do you say? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पलों को हम जी रहे थे, तालियां आप लोग बजा सकते हैं, तालियां बजाना बहुत अच्छा होता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड लाइक द लॉन्चिंग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जो बताया OMG के माध्यम से। और कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है ना। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अकड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो एक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमें मकसद, ये हमें संदेश दे रहे थे दिनेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। साथियों अब हमारे बीच में एक और सम्मानित अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत जी, उनकी पुस्तक का विमोचन होना है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर TN सुरेश कुमार जी से कि सर आप आए, कृपया अपने कर कमलों से इसका इनॉग्रेशन करें। प्रमोद कुमार राजपूत जी कृपया आप भी आए, आकाश जी कृपया साथ में आए, कोर टीम मेंबर्स जी हाँ
हमारे सभी स्टैंडीज को लगे रहने दें, हम यहाँ स्टैंड हो जाएं, सारे कोर टीम के मेंबर्स आ जाएं, जितने भी वो लोग हैं जो इस अच्छे शुभ कार्य से जुड़े हुए हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं। जी, बुक लॉन्च जी आइएगा। प्रमोद कुमार राजपूत जी की पुस्तक का विमोचन। रविशंकर साहब आपके बैठे हैं, प्लीज आइए ना, आप भी आइए ना, यू बी ए पार्ट ऑफ द ceremony. All the guests, the dignitaries, the guest of honor, and the core team members of team. और ये सुंदर सा दृश्य, बहुत अच्छा फ्रेम, डॉक्टर पी.के. राजपूत, उनकी पुस्तक का विमोचन होता हुआ। जी सर। और ये वास्तव में पुस्तक आपके हाथों में कमलों में सौंपते हुए आकाश जी, तालियां बजाती हुई ऑडियंस, माइक पकड़ के बोलता हुआ प्रिंस ग्रोवर, वीडियोग्राफी करते हुए हमारे साथी, फोटोग्राफी करते हुए हमारे साथी, चलती हुई रोशनियां, उभरता हुआ प्रकाश, कितना सुंदर नजारा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। And the journey continues is the slogan given by you, and I'm sure you will keep writing, you will keep inspiring the audience, the authors, and to the humanity as a whole. Right? बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप भी बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सर। Attitude wins. कितना अच्छा है। मैं सोचा कुछ बोलना चाहता हूँ। All of them we feel that aptitude very intelligent है, ऊपर ऐसा नहीं है। The attitude that takes you to the highest altitude. क्या attitude I can get? जैसे मेरे लिए छोटा सा आदमी छोटा फैमिली की तरह आके नहीं करा सकता है आप। It should have I will do it. ये failure no problem I will. ये नहीं कोई नहीं तो भगवान आपका साथ आके लेके जाएगा। जैसे एक छोटा सा जो कोई नहीं सोचा था 50 years back वो एक चाय वाला एक प्रेरिस हो गया इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के बिकेम फेमस। एक पेपर वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया उनका तो इट ऑल हैपेंस यू शुड नॉट रिक्शा वाला बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा कुछ हो सकता है इट ऑल लुक्स लाइक अ मिरेकल। एक ऐसे बोल रहा था एक स्लीपर पर एक बस कंडक्टर इनका मास लीडर कुछ भी हो सकता है यू डोंट नो व्हाट हैपेंस फॉर इन जी बट एंड डोंट वरी अबाउट दैट ही इज देयर टू सेट इट सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस मोर एक मिनट thank you sir, thank you so much because you have touched the heart. I always say attitude is the one thing which always take you to the altitude if you have the right attitude. This is very very clear and I believe on this, right? मैंने आप लोगों को बोला मैं 5 लोगों का बहुत आभारी इस प्लेटफॉर्म पे, 5वें का नाम नहीं लिया था मैंने, आपने सोचा बिना भी होगा। And the 5th, the important pillar is my wife. If कोई तो आज मैंने बीच के रोक के रखा हुआ था, so I must say because she is not here today because there's some work is going on at Ahmedabad, but without her extensive support I would have not been to this position, sir, what I am, because she was managing the children, she was managing my parents, she was managing the house, she was managing me rather, and she was inspiring me so that I keep on going and growing and growing. So this is the 5th person in my life who always helped me to manage, who always made me to on this particular position. So all the gratitude goes to her. If she would have not been there in my life, I think I would have not been on this particular chair. There's always a yes. I will say that behind a successful person, their own way. Actually, each one of it has come from abroad. But like parampara में ऐसा नहीं होता है. In our culture, it's something different. Always there is a lady in front of us, behind I am standing. Like Gita is. You just take one example. कोई सीताराम बोलता है, लक्ष्मी वेंकटेश्वर बोलता है, राधे श्याम बोलता है, कोई बोले राम राधे. You just take 25 example and confirm. If I am wrong, please correct me. You are right, sir. You are right. You are right, sir. You are right, sir. पहले माँ थी फिर जो है वाइफ हो गई. It is like that because माँ तो नहीं रही लेकिन जो है उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में है. So now the wife she is also always there. ये जो book है सर इसमें I'm not an author. Yes, I always inspire the people because I'm having a team of 765 people working along with me. So I always feel their success is my success. And what sir you was telling, last week I have been given the opportunity to represent India
and that to the pharmaceutical industry of India, to give the talk to the 40 ministers of Africa that how India and Africa will be able to make the things happen. And again, they have invited me on 22nd and 23rd to come to Nigeria, and to give a clear-cut guidelines that what are the things are required so that Africa can become one of the great hub of the pharmaceutical industry. So ये सर इसके अंदर छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैंने शुरुआत की थी बुक में, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, जो सीखा है वही लिखा है और कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल दिल की कहानी है जो लिखी है. Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया सर. प्लीज टेक योर सीट सर. आइए सर, अपना आसन ग्रहण करें. और अब जो अगला कार्यक्रम है वो फिर आकाश जी की एक पुस्तक का विमोचन है. आकाश जी कृपया मंच पे आ जाएं. आकाश भाभट जी, भाभट इंटरनेशनल पब्लिकेशन और एबीसीडी इंटरनेशनल पब्लिकेशन से जुड़े हुए हमारे साथी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना की है, जो आपके बीच मोतियों को चुन चुन कर लेकर के आए हैं, उनकी पुस्तक का विमोचन. सर, आपकी पुस्तक के विमोचन के लिए कोर टीम मेंबर्स प्लीज ब्रिंग द बुक. आइए सर, अरे इधर है. और फिर हम एक बार गुजारिश करेंगे गणमान्य जनों से. जी आइए, डॉक्टर टी एच सुरेश कुमार, वंस अगेन वी वुड लाइक टू ट्रबल यू सर. हम चाहते हैं कि आप ही के हाथ से, मतलब लाइक द वर्दी हैंड should always unveil the books. साक्षी जी ऊपर आइए. राजपूत जी आप भी. बिल्कुल सर. बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार. और फिर वही दृश्य है, ये दृश्य बार बार आ रहा है. ये पुस्तक का विमोचन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय आकाश भाभट. क्या बात है, मतलब दिनेश साहब आप जरूर हैं, आप भी हमारे सभी सम्मानित अतिथि इस मंच पे होने चाहिए. इस मंच की गरिमा आप लोगों के आने से बढ़ती है. प्रतिभा मैडम जी, जी तालियों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमचमाहट. बहुत सुंदर नजारा है. नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और जैसा कि सर कह रहे थे कि इफ योर एटीट्यूड इज राइट, इट कैन टेक यू टू एनी ऑफ द एल्टीट्यूड. सो यही वो पुस्तक है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो यू कैन बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. इजंट इट? दैट इज व्हाट दिस बुक इज. जोरदार तालियां. बहुत शुभकामनाएं आपको. आकाश जी कुछ कहना चाहेंगे? आकाश. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट में बोलूंगा. ये बुक जो लॉन्च की है ना, इसके पीछे जैसा हम अभी हमारा आइडेंटिटी बनाने का प्लान है कि ऑथर सक्सेस कोच बनने का मुझे एक पहले से ही ये था. अभी हमने ना क्या किया ना, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, फिर भी 4 ऑथर से अब्रॉड के, जिनको मैंने बुक राइटिंग सिखाया और उनकी बुक भी पब्लिश की है. क्या बात है. तो ऑथर की सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो सकती है मगर थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम करते हैं. अभी क्या है कि इतने सारे ऑथर्स है पर वो ऑन टाइम हम सब काम कर रहे हैं. धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे. मेन हमारा मकसद यही है कि वो बुक से आपका प्रोफेशन में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो. वो बुक को आप यूज करें अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए. तो वो सब कुछ यहाँ पे एबीसीडी से मिलेगा. एबीसीडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे बहुत सारे, और हम नंबर्स के साथ बहुत खेलने लगे हैं दिसंबर से. तो अभी ये 3रा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3रा बुक लॉन्च है और ऐसे हम आगे बहुत सारी कुछ चीजें करेंगे. 75 ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह, ये तो और भी ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा कुछ ऐसे करेंगे. नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बारे में बस बोलना चाहूंगा कि जो एकदम हारा हुआ इंसान है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है. ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स उसमें ऐड किए हैं. तो आप जब भी आपको बुक अवेलेबल होगा, मैं आपको लिंक सभी को शेयर करूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं. और ऐसे सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते रहेंगे. आप सभी का साथ हमेशा रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ. थैंक यू. और एक चीज मैं बोलना लास्ट टाइम भूल गया था, जब हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला. एक्चुअली ये सब ब्रांड एम्बेसडर्स और ये सब ये लीडर्स दिख रहे हैं, ये इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है. पेरेंट्स का ऑफकोर्स होता है, तो हम ज्यादातर उनको ध्यान नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते, पर ऑफकोर्स आई रियली अप्रिशिएट. और एक और पर्सन है एबीसीडी भाभट पब्लिकेशन के लिए स्पेशली, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, आयुषी मैम.
तो स्पेशली वो दिल्ली से आए भी है, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप सभी ब्रांड एम्बेसडर को जानते हैं, तो ऐसा हम सभी आपके सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने में हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। आप कभी भी बताइए, सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। और 2 मिनट मंच पे रहिए। मैं आप लोगों के लिए इनकी तरफ से, इनके लिए आपकी तरफ से और सबके लिए सबकी तरफ से एक बात कह दूं कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे अगर ABCD का हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे अगर बाबर का हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। है ना? तो ये जुनून भरने का काम कर रहे हैं हमारे आकाश जी और ये पूरी टीम, द लीडर their best us to guide us, and Akash ji is there with his core team to inspire us, to support all the authors, and we have a long way to go. Thank you very much. Time to occupy your seats. और बहुत ज्यादा बोल दिया गया है, 1 बजे से ऊपर समय हो गया है, भोजन का समय हो रहा है, आप सबको भूख लग रही है। आगे पता नहीं क्या करना है, मुझे आयुषी बताएंगी अभी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। जी रचना जी आप बताएंगी। Okay, so that was very nice, Prince Grover ji. So we one and only Prince Grover ji. Big round of applause. He has taken the first half of the event to such an extent that right now we just love to felicitate him for his putting that fire in that stage and arousing all the Indians from their seats to say Jai Hind. Wow. So, thank you, Prince Grover ji, for coming up and sharing your time. I had heard just now he's having another event back to back, so he'll be leaving us, and that's a sad moment, not a wow moment at all. So we wanted more wow moments with you. Because my Hindi is, of course, but I know हमें हिंदी आती है, because ऐसा नहीं कि हम हिंदी में भी नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदी में जो जुमले आपने सुनाए और हमारे दिल को इतने रोशन कर दिए, बात कर दिए, वो हम जरूर मिस करेंगे आपके जाने के बाद। So ये wow moments should continue. We have 2 amazing hosts coming up after the post lunch. So it is just like, I know the rats are running in your stomach and giving a knocking at the door. So we understand that, but we cannot bid him properly, then we have not done anything. So thank you so much, Prince Robert, for coming up to Akash Robert Publication, the inauguration of this book launch. And it was really amazing to have you. You have really put fire, you have ignited our brains. We already have IDYM's founder here. So nothing more, igniting dreams of young minds. So we always use that phrase that you have put that ignition in us. And we are there with you always. So Bhavard International is really, really happy to have you in our team. Now in a core member, you are also one of them. So welcome to the core team members of Bhavard Publications. So about Prince, I would just like to say कि इनसे हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है, बट जिस तरह से इन्होंने इवेंट को हैंडल किया, आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज हम लोगों ने जब इन्हें बताया था कि लाइक हम इवेंट करने वाले हैं, frankly speaking it was a very short notice because we had some anchors in mind, but होता है, मतलब लाइफ है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, so that thing happened. And finally we had him, so now we are grateful of whatever has happened because जो होता है अच्छे के लिए होता है, and I am really grateful because बोलते हैं ना, जो एक जैसे अभी कलाकार की बात चल रही थी कि कलाकार अपनी जगह कहीं भी बना सकता है, तो जो समा इन्होंने बांधा है आज, मुझे नहीं लगता कि इतनी तालियों की आवाज हमें 200 लोगों में भी आती अगर समा डर होगा। So thank you so much for coming down on short notice. Thank you. And also difficult for us. You will manage. एक शब्द मैं कह दूं, बस एक बात ही कह दूं कि आप भाषा की बात कर रहे थे, आप आभार की बात कर रहे थे, आप टीम में मेंबर बनाने की बात कर रहे थे। मैं आपका हूं, मोहब्बत आपकी है, दिल आपका है, और दिल की कोई जुबान नहीं होती, ना अंग्रेजी ना हिंदी, दिल से बात करता है। मेरे दिल ने आपसे बात की, आपसे दिल ने मुझसे बात की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, प्राउड टू मीट यू एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So, like till the time we move ahead, there are a few things that I would like to tell here. So,
about the event, once we proceed to the lunch, so there are 2-3 areas where we would like you to visit. Number one area is the spot here on the table with the books of our precious, cool, charming authors. Okay, cool बोलो तो अच्छा लगता है ना? Okay, तो थोड़ा जोश आ जाता है जवानों वाला, but then yes, authors are always unique. हमेशा अच्छा लिखते हैं. मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने अपनी लॉन्च नहीं करी थी. तो लास्ट टाइम मैंने लॉन्च करी थी, सुरेश सर आए थे. And it was a great experience. So definitely सबकी books देखिए. Second point is outside we have a selfie point. जहाँ पे selfie आप ले सकते हैं अपने साथ, अपने family के साथ, books के साथ. So lunch time definitely आप खाना खाइए, but इन सब चीजों में भी involve होइए because it will help you create memories. So we just want you to take some memories from here. कि आप यहाँ से आज जाए तो कुछ लेके जरूर जाएं, experiences लेके जाएं, memories लेके जाएं. So use the selfie point. The third point is just behind that wall, जहाँ पे की media coverages हैं, मतलब like you can speak about the event, you can speak about how your journey has been. So there's a beautiful backdrop there. So that is the reason why we want you to go there. Or else you have your standees, your authors. So you can use those standees to give your video vibes of how your journey has been of being an author. आप लोग कैसे author बने और आगे आप लोग क्या envision करते हैं. तो definitely आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं. And Prashant is there with us today for the videography, so he'll help us out. Thank you so much. Thank you, Sakshi, so much for briefing our audience. So we would request all our audience that before moving ahead for the lunch, you just need to cover up, and wherever you are posting your post, do tag ABCD International and Babar Publication. So you can post anywhere. It's your freedom to post anywhere. Don't forget to tag Babar International and Babar Publication so that we can get connected to you and stay connected, and you will also be knowing about our next event which comes up, and you can join with us. So it was really a nice pleasure, and the table is filled with authors. Today the whole podium and the stage is filled with guests, with geniuses all around. So we have a cluster of genius and brain minds together. So with that intention, we just need to hear their approach about the first half of the session. So we have some guests, still more, which we will be felicitating after the lunch also, post lunch. But before that, I would love to listen from few of our guests here. How do they like the event, free lunch? So, ma'am, first I'll come to you. So, what was your thing about the intelligent minds? How do you like the event? First of all, it's very difficult to speak after such a wonderful personalities here. बहुत difficult होता है दिग्गजों के बाद बात करना, बहुत difficult होता है जब इतने महान दिग्गज यहाँ बैठे हों, इतने host जो हमारे प्रिंस चार्मिंग से वो चले गए हैं, बट जब इनकी आवाज सुनने के बाद, इनकी जर्नी सुनने के बाद, जब हमारी छोटी इंसान की बारी आती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि किन शब्दों को किसमें पिरो के आपके सामने परोसे, बहुत डिफिकल्ट होता है. बट खाली एक छोटा सा संदेश मैं सबको देना चाहूंगी जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेटर्स हैं. सी जो आज सर ने कहा, डीएन सर ने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि हम अपने देश के लिए जो कर भी रहे हैं, पीछे का योगदान हम नहीं देखते हैं. See, we all see the polished part. We don't see the backstage hard work, what we really undergo through. So this is what I believe personally कि हमें बच्चों को इससे वाकिफ कराना है, बच्चों को ये बताना है जो आजकल के स्कूल के बच्चे हैं. मैं इंटरनेशनल स्कूल में हूँ प्रिंसिपल, तो मैं रोज देखती हूँ बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, बहुत ओवर पॉजिटिव हैं, उन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है, उन्हें किसी भी चीज की कीमत नहीं है. उन्हें नहीं पता कि हमें हमारे ग्रेजुएशन, हमारी शादी के बाद मोबाइल मिला था बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, और आज के बच्चों को आईफोन छोटी सी उम्र मिल रहा है. तो बहुत अंतर है. क्यों? वो ब्लेस्ड हैं, जनरेशन गैप है, वो ब्लेस्ड हैं, उन्हें सब मिल रहा है, हमें नहीं मिल पाया. उसकी वजह भी बहुत सारी थी, हमारी डिसिप्लिन, हमारे अपने कल्चर, हमारे घर के तौर तरीके, हमारे नियम कानून जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. और आज हमारे पेरेंट्स ने जो अंकुश रखा था, आज सब हम शायद उसी की वजह से यहाँ कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है. तो जब पेरेंट्स अंकुश लगाते हैं तो मुझे लगता है वो सराहनीय है,
वो सर आंखों पे उसको हमें रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन योर लाइफ इज जीरो, विदाउट गोल योर लाइफ इज जीरो, विदाउट डेडिकेशन योर लाइफ इज जीरो, without hard work your life is zero. There is no success without hard work, there is no gain without pain. This is what I have learned from my parents, because I belong to very orthodox family, but my dad was very great personality, he was an officer. My mom was illiterate but well, I can say, social person. She taught us the life. What is the life? Where the books cannot teach you. The books can only teach you for the degrees, and the life teaches you everything what you need for. So I personally believe, जो बच्चे ने अपने पेरेंट्स का आदर किया तो सक्सेस तो कोई रोक ही नहीं सकता. एग्जाम्पल टीएन सर है, एग्जाम्पल आकाश है, एग्जाम्पल हम खुद हैं, एग्जाम्पल राजपूत सर भी है. उन्होंने भी जो 5 लोगों के नाम गिनाए वो सब महत्व है. आज सब कहते हैं औरतों को, मतलब women empowerment, we are actually overpowered. We are overpowered. We are misusing our power. To be very honest. लेकिन ये पावरमेंट हमें मिला कहाँ से? हमारे घर में जो मेल हमें सपोर्ट कर रहे हैं. Because I belong from a very orthodox North Indian family. I'm from Lucknow, born and brought up in Mumbai. You know, हमारी कम्युनिटी में आज भी लड़कियों को थोड़ा सा वो बोला जाता है कि नहीं, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, घर जाके चूल्हा चौका ही तो करना है. आई अग्री, मैं भी चूल्हा चौका करती हूँ. मेरा दिनचर्या 4:30 बजे शुरू होता है, रात को 12 बजे खत्म होता है. Being an international school principal, I strongly believe value is very much important. और यही आप कैरी फॉरवर्ड करो अपने बच्चों में. तो आप जितने भी यहाँ बैठे हो सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों को अच्छा इंसान बनना सिखाइए. Attitude builds, that is true. Without attitude you are nothing. अगर जमीन में नहीं चिपके रहोगे, ऊपर से गिरोगे बहुत चोट लगेगी. तो जमीन से चिपके रहो, धरातल पे रहोगे, जिंदगी एंजॉय करोगे. और ये मेरा मानना है और ये मैं ही फॉलो करती हूँ. दो आई एम अ ग्लोबल टीचर ट्रेनर, ग्लोबल स्पीकर, बट वो सब ग्लोबल है. पहले तो दिल हिंदुस्तानी है. पहले तो दिल हिंदुस्तानी है. अगर अपने देश के लिए कुछ न किया तो दुनिया के लिए करके फायदा क्या? तो चैरिटी बिजनेस एट होम. पहले घर को बनाओ, सोसाइटी बनाएगा. सोसाइटी बनेगी, आपका समाज बनेगा, आपका देश बनेगा, आपकी दुनिया बनेगी. और आपकी पहचान आपके कामों से होगा, ना कि आपके अटायर से. जैसे सर ने कहा था, मॉडर्निज्म इसमें नहीं होता, मॉडर्निज्म यहाँ होता है. आपके अटायर से मॉडर्न नहीं. डेफिनेटली वी ऑल हैव टू बी प्रेजेंटेबल. मैं नहीं कहती हूँ कि हमें प्रेजेंटेबल नहीं रहना है, बट हमें विकसित यहाँ से हो रहा है, ना कि हमारे कपड़ों से. कपड़े इज अ प्रायोरिटी, बट on a secondary basis. So thank you once again for having me here. जैसे मैंने कहा, दिग्गजों के सामने बात करना बहुत डिफिकल्ट है, बट टीचर हूँ तो थोड़ा बहुत तो बोल ही लूंगी. माइक आने के बाद तो बस वही हुआ और कुछ नहीं. Thank you so much, Akash, and all the best wishes from my end to you. Wherever you need, we are there for you. God bless you all the best. We need your support, ma'am. Ma'am, please keep standing. I would request Akash ji to come up and felicitate ma'am. And I would also request. का मतलब क्या है? Add-on responsibility. Yes. Honor के साथ responsibility. Yes, that is coming. आ रहा है तो बहुत responsibility. All authors are responsible, इसलिए Yes. I would request the 4 team members also to be there. साक्षी के सर पे जाएगी. Please come up. I'm going to do that. To felicitate ma'am, please be on the stage. तालियां बजते रहें. That gives energy and friction. Your hand rubs the other hand, and there is science in that also. So please continue the science, and your energy muscles inside, that has also been generated. I don't know much about science, so I'll not go inside that. I just come with the positive energy which vibrates with a clap. So thank you so much, ma'am. I request Ravi sir. Yes, please. All are respected guests. Photo with a pagri. I'll be glad to have this photo as my memory. Because you know, generally I don't. And wear Akash ji also, I would request our team members to please give a pagri to Akash ji also. And sir, your pagri also. I'm so sorry. Akash ji का एक पगड़ी चाहिए. I would request my 4 team members.
one pagri for Akash ji also. Akash ji, Akash ji. Wow. Clap, clap. Where is the clap? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी यंग जनरेशन को देने के लिए और आपको बुलाऊंगी ताकि आप मेरे बच्चों में और एनर्जी भर सके Yes, yes. मेरे गुरु ने हमेशा बोल रहा था हमें देगा always go and spend more time with them. इसका मतलब क्या है? As you grow older and older, you will younger and younger. मतलब you improve your knowledge. ये तो you don't update, you go out of date. So that's why I always say 25,000. I meet about 25 to 30,000 students in every year. Even in school, it can be 80, it can be 80, India outside. I enjoy. That is my Nobel Prize. I really enjoy it. Because moreover, they always say, if you go and talk to some 60, 70 years old, yeah, 1 year, this kind of sense. You go and tell the students, they're very serious. So I love students because they are the future. True, very, very For women, a man is a power. See? No. So for women, man is a power. No. Without he, she is incomplete. Without No, she, he is Yes. incomplete. Woman, the word woman is having WOMEN in it. So MEN is always required for a woman to be successful. Yeah, so will say something. यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता नार्य पूजा है हम लोग क्या है always mother or wife or daughter always so ये बोलते हैं ना भारत माता की जय बोलते हैं भारत पिता की जय कोई बोला है so always according to me But sir, I'll add on to it that women are able to reach here because of the men behind them. Because of their support, we are here today because of them. So it is a joint venture. It's a mutual understanding and a joint venture. We can never do it alone. So we need to accept that whether, I don't know, many will agree with me or not, but yes, we need to accept that we need their cooperation and with us to achieve this, what we are today. If that would not be there, I would not be here, ma'am would not be here, and all my team members would not be here. So we are here because of a men in the house who has been supporting us. So thank you so much. Thank you so much. Yeah, so we'll move ahead with the program till let all the rats keep on running inside her stomach and let them play some more kabaddis inside. And in the meantime, let us take one more eminent guest. As I told you, we have a riot of guests and scholars amidst us. Each one of them is a dignified member who is present here. And we are really, really honored. Bhabad International Publication is really honored, as we always believe pen is mightier than sword, which we have always maintained. And we have another eminent guest. I would request Nijdeep sir to please come up and let us honor him. And I would request Akash ji to come up on the dais to honor him, to felicitate him. Yes, the core team members, please come up on the dais. Please. Sakshi ji, please come up.
तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी. The positivity should keep on flowing. We should inhale positivity and exhale negativity. So keep on inhaling that, and with the blessings of Harvard International Publications, we have been able to publish so many books, which you can see on the table. As Sakshi ji said, just have a glance on the table. You will find eminent, all the writers and authors there. So thank you so much, Harvard International Publication, for promoting such scholars and finding out from the sand and bringing them to this podium and giving them that status which they need. Thank you so much, Harvard Publication, for doing that. We're really honored, really, really honored. From the bottom of our heart, thank you. Thank you, team members, thank you. All the time we are running up and down. So thank you. And the rats inside the stomach are also running. So in the meantime, we go ahead. I will call my next, host will announce the lunch. I need to ask Akashi. So one very important announcement by the core team members. We have a lucky draw and there is some surprises coming up post lunch. So it is a request that those who are felicitated not to go away anywhere, that since we finish with the felicitation, we can move ahead. We have more eminent guests to be honored and a lot of other things more which is coming up. And the lucky draw, please don't forget to be in touch with our core team members. What is the lucky draw all about? So our core team members will be guiding you. So don't disappear after the post lunch. Be right back here after the lunch. So Akash ji, can we announce for the lunch break? Or we'll have one more program? Or we can announce the lunch break. Is it ready? We can send our guests there. Just, okay, so. अपने साथ बहुत अच्छे, मैं ऐसा बोलूँगा कि बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज जिनको हमने अभी फेलिसिटेट किया है, बहुत ग्रेट है. और मैं इतना ब्लेसफुल समझता हूँ, इतना कि लोग खुद पूछते हैं, खुद बताते हैं कि भाई तेरा ये गलती हुआ है और यहाँ पे सुधार करो. तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद. और वैसे ही मैम ने किया था, राजपूत सर हमेशा जब भी कॉल करते हैं एक अलग ही मोटिवेशन, अलग लेवल पे जाते हैं. सच में बोल रहा हूँ ये दिल से, सिर्फ इनके एक खूबियां मैं बता रहा हूँ. और जब भी रविशंकर जी से कनेक्ट होते हैं तो ऐसा एक बार भी मैंने जितने दिनों से हम कनेक्ट हुए, एक बार भी ना कभी समझा नहीं है. इमीडिएट रिप्लाई एनर्जी के साथ यंग पर्सन को कैसा रहना चाहिए वो उनसे हम सीख सकते हैं. सर तो मतलब एकदम दरिया दिल जैसा हम बोल सकते हैं. इतना अच्छे से ग्राउंड टू अर्थ इतना प्यार करते हैं. और निजदीप सिंह सर है, लास्ट टाइम हम मुंबई में मिले थे मैम के बुक के रिगार्डिंग, पर बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ. बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी चीजें होती है. देखिए ये हार्वर्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन, या तो फिर हमने बहुत सारा पैसा था और वो लगाया पब्लिकेशन खड़ा किया, ऐसा कुछ है ही नहीं. मतलब हम तो बिजनेस कोचेस को सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सिखाते हैं बिना पैसे का बिजनेस कैसा करें, और वही हमने करके दिखाया. एबीसीडी इंटरनेशनल लॉकडाउन से चल रहा है और हार्वर्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन जब से शुरू हुआ है 22 डेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना, आज 30वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तो बहुत सारे और ये सब कुछ क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, गॉड को, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज को, ये सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को. उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ. हम तो बस एक मीडियम है और बहुत सारा ये कंट्रीब्यूशन. We are positive family coming Yes, together under one exactly. umbrella to do something great for the Yes, society. yes. And in 6 to 7 months 11 कंट्रीज में हार्वर्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. तो ये सब कुछ पॉसिबल आप जैसे पर्सनालिटी से ही हुआ है. तो फिर से एक बार धन्यवाद. और फिर हम लंच के लिए जाएंगे, उसके बाद फिर से अपना मेन प्रोग्राम जो है, जो अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को फेलिसिटेट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करेंगे. और फिर उसके बाद फिर बुक्स भी आपके सामने आएगी. Yeah, thank you so much. Yeah, we have
a young entrepreneur, a young person, Akash ji. So what more to say about him? You all have seen him from the beginning. He's the one. It's a one-man show. Of course, team makes a difference, but then he is the only brain, only mind who is working behind it. And we need the youngsters to be like this. And a person who can work like this day in and day out, then the company always reaches that pinnacle and which you can never imagine. And he's the brain who is working behind always, never wants to come up in the front. It's we that who pushes him. We also have IDYM founder Ravi Shankarji, a young soul here who is also working. So a lot of youngsters, ma'am, you might be knowing that the youngsters now are filled with so much of power, but we need to just channelize them. So we, being a teacher myself for 26 years, and right now I'm the Maharashtra State Board also, working with the NEP, this thing concept, with the new books launch and all. So I have seen this young minds, they are extremely talented, but if you don't channelize their brain, they will go to a different point. Sir, if you agree with me, TN sir, these young brains are ignited already, but we as experienced person, because we have seen them, it's our duty now to take them and show them that this is the path, and they will run in that. Only that we should be able to be the torch bearer and put them in that path. And that is our work. Our work is done. And if they are not being able to be guided, we can take it into a different route. So I'm thankful to Akash ji, Ravi Shankar ji, who has been being the young mind, and they are giving all these roots and embarking them. So thank you, Akash ji, for giving the platform to the youngsters, to all the writers and authors, and all our eminent personalities who have gathered here today, and especially Akash ji's parents and sister who has come all the way. And this is very, very important that when our roots are with us, we can excel in that. Our roots are very, very important. हम कितने भी आगे चले जाए, अगर हमारे जड़ें नहीं है साथ में, तो हम कभी भी खड़ा नहीं हो सकते. अगर एक पेड़ को खड़ा करना है, तो उनकी जड़ तो रहना चाहिए. जो आकाश जी अपनी जड़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकते. वो पेड़ कभी झड़ ही नहीं सकते, जिनके रूट्स उनके साथ है. So thank you very much. Yes, yes. खूप आभार. मनापासून आभार तुमचा साठी तुम्ही इथेच आलंच आहे, म्हणून आम्ही खूपच आभार तुमचा. आणि येस 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 थँक्यू. सगळ्यांनी आभार. तुम्ही येण्यापासून उद्याला पण भेटून गेल्या मी.